Assalamualaikum. Thanks for having me. Let me give you a brief introduction of myself. You might have known me before. I'm Bilal Khalid Khan. I'm FCA. और अनिल ने बात की कि ऑनलाइन और इन पर्सन होना ज़रूरी है, तो जस्ट लेट यू नो कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड फर्स्ट ऑनलाइन कॉलेज विद जाफर साहब. I laid down the foundation of PAC School of Distance Learning. I was the vice principal, and I was the first person who delivered first online lecture on reporting, and also the BFD. So then I moved to Islamabad, so that I had to move all with my family here. So I started my own Khan School of Distance Learning, and I was teaching online since 2015. But now, due to some professional commitments, I'm no more offering online live classes. So anyhow, I'm being a pioneer and innovator. I don't mind in person or online. I'm okay with everything. Anyways, आज का जो सेशन है उसमें स्टैंडर्ड्स जो से हैं ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें कुछ नॉलेज में आप लोगों की भी टेस्ट करना चाहूँगा ताकि एक टू वे ट्रैफिक चले और बोरिंग ना हो. इसमें इनिशियली आई वुड लाइक टू नो कि कितने आप लोगों के ख्याल में इस वक्त एप्लीकेबल IFRS हैं. व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ IFRS वी हैव? एनीवन? इसका मतलब है कि अपडेट लोगों को होने में काफ़ी टाइम लगता है. ऑब्वियसली इंडस्ट्री में जब जॉब कर रहे हो, इवन प्रैक्टिस में हो, तो टोटल अब 40 स्टैंडर्ड हैं जो बुनियादी तौर पर एप्लीकेबल हैं, और इसमें एक रिप्लेसमेंट आने वाली है IFRS 18 जो IAS 1 को रिप्लेस करेगा. जो प्रेजेंटेशन जिसको हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं वो प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिप्लेस होने जा रहा है. बट एनीवेज एट द मोमेंट IAS 1 इज देयर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि हमने बात की थी कि टोटल स्टैंडर्ड्स कितने एप्लीकेबल हैं. तो 40 स्टैंडर्ड्स की हमने बात की थी, लेकिन उसमें बीइंग ए प्रोफेशनल, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए तो ये नॉलेज होगी, लेकिन जो मेरे पास बीइंग ए कंसल्टेंट या IFRS कोच जो इंक्वायरीज प्रैक्टिकल आती हैं, उसमें एक बड़ा इशू ये होता है कि दे डोंट नो हाउ टू identify the relevant standards in some specific transactions. तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि हम ज़हन को ओवरबर्डन ना करें, हम चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा जो है रेलेवेंट हैं और कौन सी जो सी हैं इसमें रेलेवेंट इतनी नहीं है. अगर हम अपनी आसानी के लिए इसको चाहें तो बुनियादी तौर पर जो IFRS है हम उनको 3 कैटेगरीज में इजीली डिवाइड कर सकते हैं. इसमें एक कैटेगरी ये होती है आपकी प्रेजेंटेशन की. अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड्स को हम 3 कैटेगरीज में करें, तो फर्स्ट कैटेगरी वुड बी प्रेजेंटेशन. कुछ स्टैंडर्ड्स IASB ने सिर्फ इस मकसद के लिए बनाए हैं which talks about presentation of some specific transactions और overall presentation. लाइक IAS 1 है जो हमें नाम से ही पता है प्रेजेंटेशन, तो हमने उसमें उसकी रेलेवेंसी को भी ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या इवन एग्जाम में जब हम बैठे हों तो हमें इजी हो आइडेंटिफाई करना कि इसमें इस ट्रांजैक्शन की रेलेवेंसी किस स्टैंडर्ड से बन रही है. दूसरी जो है वो बुनियादी तौर पर मेन एसेट्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स लिंक करते हैं, और इसके अलावा हम बाकी सबको अदर्स में डाल सकते हैं बिकॉज इसमें आपको पता है कि रेवेन्यू भी आ जाता है, इसमें प्रोविजनिंग भी आ जाती है, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं जो थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चलते हैं. अब इसमें थोड़ी सी आपसे भी मुझे इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि हाउ डू यू सी ऑल दी स्टैंडर्ड्स योरसेल्फ. सो आई वुड लाइक टू नो योर फीडबैक ऑन दैट कि IAS 1, चले IAS 1 टू स्टार्ट विद, आई विल से कि ये तो प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है. व्हाट अबाउट IAS 2? एसेट्स का है बिकॉज इट ऑफर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो एसेट्स और अदर स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कोई ना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं
आप उस ट्रांजैक्शन में कोई एडजस्टमेंट डालते हैं, कोई उसमें डबल एंट्री करते हैं। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन सिंपल ये होता है कि इस इंफॉर्मेशन को आपने ऐसे दिखाना है, इसको इस तरह प्रेजेंट करना है ताकि ये यूजर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। सो IS2 ऑब्वियसली एग्री। व्हाट अबाउट IS7? कैश फ्लो प्रेजेंटेशन, इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट P&L पे आके खत्म हो जाता है। उसके अलावा बाकी सारी उसकी एक्सटेंशंस हैं, उसके यूजेज के साथ क्या बैलेंस शीट के डिफरेंसेस को निकाल के कैश फ्लो में पुट इन कर देते हैं। यार ये थोड़ा इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो IS7 थोड़ा इको प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद IS8, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। IS8 किससे डील करता है? जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड एरर्स। प्रायर पीरियड एरर्स क्यों कहते हैं? प्रायर पीरियड एरर्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर आपने गलती अब पकड़ ली तो फिर गलती तो ना हुई ना। गलती तो वो है जो माजी में हुई और पता ना चली। सो अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या IS8 बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट कैसे करना है IS8 में? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार IS16 के मुताबिक PPE का कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाओ, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज टेक्निकली स्पीकिंग आपने IS16 के मुताबिक किया। तो IS8 फिर क्या बता रहा है? IS8 बता रहा है उसकी प्रेजेंटेशन कि आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चलाना है। एम आई क्लियर? सेम वे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट हमें पता है कि अगर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई भी नॉन कैश एडजस्टमेंट आ जाए, कोई भी नॉन कैश चेंज है, वो एस्टीमेट होता है। अगर रिसीवेबल्स कैश आने से कम हुए या पेएबल आपके परचेज से बढ़े तो वो तो ठीक है, तो इन्वेंट्री आई है वो। लेकिन अगर आपका पेएबल खड़ा था वो कम हो गया और नॉन कैश एडजस्टमेंट की वजह से हुआ, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो हम बिल्कुल क्लियर होकर चलते हैं कि अच्छा यार कैश तो इन्वॉल्व नहीं, बस ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, जारी बात है कि ये भी IS8 ये नहीं बताता कि कौन से हालात चेंज होंगे, वो तो आपने खुद देखना है। अब IS16 में ही आप वापस आ जाएं और आप कहें कि नहीं यार ये एसेट जो सा मैंने लिया था ये 5 साल यूज करना है, लेकिन ये हर साल मुझे इक्वल बेनिफिट नहीं देगा, ये पुराना होता जाएगा। जिस तरह गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, माइलेज गिर जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाती है, ऐसे ही है। तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने सोचा था स्ट्रेट लाइंस रहेगा नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है ये रिड्यूसिंग बैलेंस होना चाहिए, इसका बेनिफिट डिक्लाइन कर रहा है, ऐसे ही है। फिर आप कहते नहीं यार गाड़ियां बहुत महंगी हो गई है, मैंने इसका रेजिडुअल सोचा था, रेजिडुअल वैल्यू 10% होगी, बट आई एम थिंकिंग ये 25% या 30% तो मुझे दे देगी 5 साल बाद, ऐसे ही है। तो इसी तरह जब आप पैटर्न का चेंज देखते हैं, अब ये भी नॉन कैश ही है ना, बट इन दिस कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस हुए ना, तो ये जब आपके चेंज हुए तो जाहिर बात है कि ये सर्कमस्टांसेस IS16 के मुताबिक चेंज हुए हैं। तो IS8 अगेन वो बताता है कि अच्छा अगर चेंज हो गए तो भाई प्रोस्पेक्टिवली इसको ट्रीट करो, जो करंट ईयर का बनता है वो करंट ईयर में डाल दो, पिछलों को छोड़ दो, क्योंकि पिछले सालों में जो आपने सोचा था वो सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से चल रहे थे। ठीक इसी तरह गलती है तो गलती भाई आज पकड़ ली है, तो गलती तो पीछे हुई थी, अब वो गलती अगर ठीक होगी तो वो भी किसी और स्टैंडर्ड के तहत होगी। तो आई थिंक नाउ वी आर क्लियर कि IS8 इज ए प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड, इट डजंट ऑफर एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट टॉक्स अबाउट कि अच्छा पॉलिसी का चेंज किया है तो फिर आप मेरे पास आए। तो याद रखिए कि IS8 आपके बाकी जितने भी एसेट्स के और अदर स्टैंडर्ड्स हैं इन सब के लिए रेलेवेंट है। तो ये बीइंग स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि पेपर में सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो प्रोफेशनल लेवल पे मैंने बच्चों को देखी है कि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, IS8 को भूल जाते हैं
और वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज है। तो ऑब्वियसली आपको अगर ये क्लैरिटी होगी तो आप इस स्टैंडर्ड को सही अप्लाई कर सकेंगे। वेट, अच्छा, सो आई सेट, अच्छा आई एस 10 ने हमें ये बताया था कि यार अगर फाइनेंशियल पीरियड खत्म हो जाए 31 जून को या 31 दिसंबर को, तो अकाउंट्स में डबल एंट्री की कहानी खत्म नहीं होती। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद भी हो, तो उसकी एडजस्टमेंट भी आपको रिपोर्टिंग डेट में डालनी पड़ सकती है। अदरवाइज नॉर्मली आप सोचते हैं कि अच्छा यार 1 जनवरी आ गई या 1 जुलाई आएगी, नई फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होंगे इसकी डबल एंट्री मैंने करंट ईयर में डालनी है। लेकिन IS 10 ने हमें कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में क्लैरिटी आपको अगले साल में आती है, तो आप उसकी एडजस्टमेंट डालें। बट जाहिर बात है कि इधर कोई फ्री हैंड तो नहीं दिया जा सकता था। जब फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता था तो कहीं तो हमने उसको रोकना था कि भाई अगला पूरा साल तो नहीं ना, कि अगले पूरे साल में इवेंट होते रहे और हम देखते रहे कि यार इसका ताल्लुक पिछले साल से तो नहीं। तो उन्होंने उसको कहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डेट ऑफ ऑथराइजेशन पे, कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटेड अकाउंट्स फाइनल करके शेयर होल्डर्स को भिजवा दें, बस उस दिन तक का कट ऑफ है। उस दिन तक कोई इवेंट्स ऐसे हों जिनकी वजह से पिछली कोई ट्रांजेक्शन्स या कंडीशंस क्लियर हो जाए तो आप एडजस्टमेंट एंट्री डालें, अदरवाइज करंट ईयर में फिर डालें। क्लियर? अब इसमें एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो नॉन एडजस्टिंग का तो चले आप डिस्क्लोजर दे देते हैं। जो एडजस्टिंग इवेंट होता है, क्या ये वो बताता है कि इस एडजस्टिंग इवेंट की जो अमाउंट है मेजरमेंट कैसे करनी है? क्या IS 10 ये बात करता है? नहीं। इसके लिए आप क्या करते हैं, नॉर्मली IS 37 में चले जाते हैं प्रोविजनिंग के लिए, ऐसे ही है। तो फिर IS 10 स्टैंडर्ड किस दर जाएगा? प्रेजेंटेशन। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद IS 12 आ गया, इनकम टैक्सेस, भाई डेफर टैक्स, करंट टैक्स, बहुत चीजें आ जाती हैं, लेकिन इसका एसेट से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो हम एक इकोनॉमिक रिसोर्स की कर रहे हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास है और जिसको यूज करके या बेच के हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जबकि टैक्स उस एसेट के यूज के नतीजे में आने वाले नफे नुकसान की बात करता है। क्लियर? तो ये अदर्स में चला जाएगा। उसके बाद IS 16, नो नीड टू डिस्कस, इसमें ऑब्वियसली क्लियर है सबको कि ये एसेट्स का सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है, सबसे फेमस स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं IS 19 की, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें कुछ आर्गुमेंट्स भी हैं और काउंटर आर्गुमेंट्स भी हैं। हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स, देखिए जी, इसमें जो अकाउंटिंग वगैरह करनी है वो तो एक्चुरियल वैल्यूएशन ने करनी, वैल्यूअर ने करनी है। हम तो अकाउंटेंट्स लोग हैं, वो एक रिपोर्ट दे देता, आप उसकी बेस पे एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो वो बता रहा है कि जी अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान होगा तो क्या करना है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होगा तो क्या करना है और उसके डिस्क्लोजर क्या करने हैं। बट द पॉइंट इज कि हमें पता है कि उस वैल्यूएशन के नतीजे में अगर प्रोविजनिंग चेंज होती है या वैल्यू चेंज होती है तो एडजस्टमेंट तो डालनी पड़ती है ना। तो इसको हम अदर्स में क्लासीफाई करेंगे बिकॉज इट्स नॉट प्योरली प्रेजेंटेशन। उसके बाद IS 20, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब आपको एसेट्स या कैश, इन दोनों सूरतों में अगर कुछ भी देती है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। अदरवाइज ओवरऑल हम कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस, को टैक्स में वेवर दे दिया, कुछ वैसे एग्जामेशन दे दी या कुछ वैसे रिलैक्सेशन दे दी एग्जामेशन, तो वो ओवरऑल असिस्टेंस कहलाती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंस का वो पोर्शन है जिसमें आपको कैश या कोई एसेट गवर्नमेंट दे दे, कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो वो डिपेंड करता है। तो ये भी ऑब्वियसली क्योंकि उसके ट्रीटमेंट की बात करता है
कि उसे नॉमिनल वैल्यू पे ले या फेयर वैल्यू पे, और उसको कैसे करें, तो ये बुनियादी तौर पर आपके अदर्स में चला जाएगा। ये भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है। तो ये दो कैटेगरीज जो सी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। फिर IS-21 आता है। फिर IS-21 है, इसमें हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, कि अगर हम फॉरेन करेंसी में डील करें तो दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं, कि या तो एक पाकिस्तानी कंपनी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करे, या एक पाकिस्तानी कंपनी जिसके फॉरेन ऑपरेशंस भी। तो ये दोनों सिनेरियोज IS-21 डील करता है। और बिकॉज ये आपको पूरा ट्रीटमेंट बताता है कि आपने इनकम एक्सपेंस पे एक्सचेंज रेट लगा के उसके साथ क्या करना है, एसेट लाइबिलिटी के साथ क्या करना है, तो ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है, और ये अदर्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद IS-23 में भी कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो वो कैपिटलाइजेशन की बात करता है, कि इंटरेस्ट को आप एसेट में कैपिटलाइज कर दें, बट ऑब्वियसली वो बात करता है कि बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, बट इन सम केसेस क्वालिफाइंग एसेट की केस में आप उसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। सो इट डज ऑफर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद IS-24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस प्रेजेंटेशन। उसके बाद IS-26, ये जो आपके फंड्स होते हैं, उन फंड्स ने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, ग्रेचुटी फंड हो गया, तो ये उस ट्रस्ट की तरफ से जो रिपोर्टिंग की जानी है, ये उसकी बात करता है। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ IS-1 फॉर फंड्स। तो अगर IS-1 प्रेजेंटेशन का, तो फिर IS-26 भी प्रेजेंटेशन का। उसके बाद आपके आज के सिलेबस में से स्टैंडर्ड आ जाता है IS-27, जो बात करता है कि अगर कोई कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो साथ वो जो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, उसको अब आपने IS-27 के तहत करना है, और उसमें फिर वो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, एसेट है, तो इसको एसेट्स में क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी को डील करती है। इसी तरह IS-28 है, वो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को ट्रीट करता है, अकाउंट इक्विटी मेथड की बात करता है, तो हम इसमें डाल। उसके बाद IS-29 हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी अगर हो, खुदा न खास्ता, इन्फ्लेशन तो हाई है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी किसे कहते हैं? 100% इन्फ्लेशन फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स, वो हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जिम्बाब्वे है, तो वहां पे 10 बिलियन आई थिंक डॉलर में डबल रोटी आती है, तो वो नोट 0 ही होते हैं, तो अल्लाह महफूज रखे बहरहाल। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होता है, बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फिर वो रियलिस्टिक चीज़ नहीं होती। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ऑफर करता है, बिकॉज यू हैव टू चेंज द फिगर्स इन योर बैलेंस शीट एंड P&L। तो ये IS-29 आपका हम अदर्स में डाल सकते हैं। इसके बाद हम IS-32 की बात करें, तो IS-32 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, और ये बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इशूअर के इश्यूज को डील करता है, इसका होल्डर से ताल्लुक नहीं है। तो ये भी क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है, आपने वो कंपाउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुना ही होगा। IS-33 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो होता है जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में किसी चीज में इफेक्ट डालता है। तो क्या IS-33 ऐसी कोई चीज देता है? तो बुनियादी तौर पर IS-33 ये होता है कि जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि हम बनाते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक कस्टमाइज या वो कल्टीवेटेड रिपोर्ट्स नहीं होती। लेकिन ISB कहता है कि क्योंकि शेयर होल्डर का स्टेक सबसे ज्यादा होता है उसमें, तो क्यों ना कोई ऐसा परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे दिया जाए जिससे वो जज कर सके कि उसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, या पोटेंशियल इन्वेस्टर को जजमेंट में आसानी हो। तो EPS कौन सा है? ये बुनियादी तौर पर एक प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर देता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को।
फिर IS 34 की हम बात करें तो ये IS 1 का बच्चा हम कहते हैं इसे, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि अगर आपने 3 महीने 6 महीने 9 मंथ्स की आपने रिपोर्टिंग करनी हो तो फिर आपने क्या करना है। तो अगर IS 1 प्रेजेंटेशन का है तो इंटरम भी प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड ही बनेगा। उसके बाद IS 36 इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट किसकी? एसेट्स की, और स्पेसिफिकली नॉन करंट एसेट्स की। तो इस वजह से ये एसेट्स रिलेटेड स्टैंडर्ड है, तो आप उसे इधर डाल सकते हैं। IS 37 प्रोविजन, तो मैंने जिक्र भी किया था कि IS 10 ये बताता है कि एडजस्टिंग इवेंट्स। इसी तरह चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसमें भी आप जाते हैं तो उसमें जब आपका एस्टिमेट होता है तो वो जो चेंजेस आते हैं वो सारे IS 37 के तहत ही आप डील करते हैं। तो IS 37 आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही ऑफर करता है, लेकिन हम उसे अदर्स की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद IS 38 इंटेंजिबल। उसके बाद IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और उसके बाद एग्रीकल्चर, वो भी बायोलॉजिकल एसेट है। फिर उसके बाद IFRS 1, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS। तो ऑब्वियसली इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंटेशन, जब पहली दफा आप कर रहे हो तो आपने कैसे चलना है। उसके बाद IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, नो डाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अदर्स में चला जाएगा। एम्प्लॉयज को, एग्जेक्टिव्स को आप पेमेंट्स करते हैं शेयर्स में या शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो IFRS 3 आज के सिलेबस का आपका हिस्सा है, और ये बेसिकली बिजनेस कम्बिनेशन है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डील करता है, और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो हम इसको एसेट्स में डालेंगे। क्लियर? क्योंकि ये बिजनेस कम्बिनेशन की बात करेगा। उसके बाद IFRS 4 था, वो खत्म हो गया, वो IFRS 17 ने टेक ओवर कर लिया इंश्योरेंस को। फिर IFRS 5 है, वो भी हेल्ड फॉर सेल है, और वो किन एसेट्स की हेल्ड फॉर सेल है? नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट एसेट ही है, हम उसे भी इधर ले जाएंगे। फिर IFRS 6 जो सा, ये एक्सप्लोरेशन और मिनरल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल है, और उसमें कॉस्ट को आपने, एसेट को, इन्वेस्टमेंट को कैसे या खर्चे को आपने कैपिटलाइज करना है। फिर IFRS 7 है, ये टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर्स, ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर्स की बात करता है। तो ये बेसिकली आपका IFRS 7 है। उसके बाद IFRS 8 है आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफर करता है? वो सिर्फ ये बताता है कि अच्छा यार, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, आप जूसेस भी बेचते हैं, आप पानी भी बेचते हैं, तो ये इसके जो कस्टमर बेस है वो डिफरेंट है, इसकी इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स फ़र्क हैं, तो आप इसका ब्रेकअप भी दें ताकि हर सेगमेंट के बारे में थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सके। तो IFRS 8 को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट में डाल देते हैं। फिर IFRS 9, ये आपका कल का टॉपिक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये ओबियसली बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। मैं पिछली दफ़ा खैर आई कैब में IFRS 9 पे प्रेजेंटेशन दी थी, बट इस दफ़ा मैंने कंसोलिडेशन पे किया हूँ। फिर IFRS 10 क्योंकि कंसोलिडेशन की बात करता है, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी की रिपोर्टिंग की बात करता है, तो वो आपके एसेट से रिलेटेड बन जाता है। इसी तरह IFRS 11 है, वो जॉइंट अरेंजमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर की बात करता है। फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज के डिस्क्लोजर्स के लिए IFRS 12 उन्होंने रखा हुआ है। फिर फेयर वैल्यू की मेजरमेंट, पहले वो याद होगा जो मेरे एज ब्रैकेट के हैं कि वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज। फिर अब ये चला गया है डिफरेंट। मुझे बताएंगे कि IFRS 13 फेयर वैल्यू की मेजरमेंट करता है, कौन से दो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो स्टिल इससे एक्सेप्शन लेते हैं? कौन से दो स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फेयर वैल्यू IFRS 13 वाली नहीं चलती, वो पुरानी वाली चलती अभी भी? नो क्लू? IFRS 2 और IFRS 16, लीज और शेयर बेस्ड पेमेंट में फेयर वैल्यू अभी भी
उनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में डिफाइन है, वो IFRS 13 वाली आपने अप्लाई नहीं करनी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद IFRS 14 है, ये गवर्नमेंट के रेगुलेटरी डेफरल से रिलेटेड है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद IFRS 15 एवरीबडी नोज कि रेवेन्यू है, और फिर IFRS 16 है, लीज्ड एसेट आपका बनता है, और फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IFRS 17, ऐसे ही है। अब ये आपके 40 स्टैंडर्ड आ गए, ठीक है, तो हम इसको काउंट भी कर लेते हैं तो हमें अंदाजा हो कि है। इसमें मैं बता दूं, अगर जो लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं तो मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, शायद आप लोगों ने देखे हो। तो ऐसी बात ये है, बेसिकली उन फ्लो चार्ट्स का इफेक्ट ये आया कि 2 महीने पहले तक मेरे 6,000 फॉलोअर थे, आज 26,000 फॉलोअर्स हैं। और जब मैंने फ्लो चार्ट्स शेयर किए, देन आई रियलाइज्ड कि दुनिया में कभी किसी ने फ्लो चार्ट्स बनाए ही नहीं थे, और किसी को आइडिया नहीं था कि IFRS की प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट्स की सूरत में भी हो सकती है। इनिशियली मैंने विजियो यूज़ किया था, लेकिन अब मैं माइंड मैपिंग यूज़ करता हूँ। तो वो भी आप मेरी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे cloudoutglobal.com पे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो 100% स्टैंडर्ड्स के हैं, ठीक है। तो वो जो हम डिस्कस करेंगे और जो फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाते बनाते वो हो गया। अभी मैं ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बना रहा हूँ, फिर लेटर US गैप के इन प्रोसेस हैं, वो बनेंगे। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं, तो ये हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन के हैं। जो प्योरली प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ऑफर नहीं करते। एसेट से रिलेटेड गिने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टैंडर्ड आपके एसेट्स के हो गए, और फिर अदर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। गिनती आसान हो गई, 13 जमा 13 26, 26 जमा 14 40। सो 40 स्टैंडर्ड्स अब आपने कैटेगराइज कर लिए, और आपने रियलाइज कर लिया कि भाई ये तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, जब आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर ये लिस्ट हो तो ये मेरे फ्लो चार्ट्स में अवेलेबल है। तो इसलिए तस्वीरें खींचने की बजाय वो माइंड मैपल में खूबसूरत बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। सो वेरी सिंपली व्हाट वी नीड टू सी हेयर के ये 13 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जहां पे अगर तो आप MNC में काम कर रहे हैं तो शायद आपको IFRS 8 की जरूरत पड़ जाए, या कुछ स्पेसिफिक, या आप अब बैंकों पे अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो ऑब्वियसली IAS 12 शायद आपको जरूरत पड़ जाए। तो इस तरह की चीजें, अदरवाइज एक आम बंदा जो पाकिस्तानी कंपनी में काम कर रहा हो, जो लिस्टेड हो, या जिसको ऑब्वियसली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो वो ऑब्वियसली इन 14 और अदर स्टैंडर्ड्स में से ढूंढेगा। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो IFRS हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि IFRS के अलावा भी कुछ चीजें ISB ने बना के रखी हुई हैं। सर, ये असल में वो लिखने की आदत नहीं रही, तो इस वजह से लिखना बड़ा गंदा डॉक्टर की तरह शुरू हो गया। अच्छा, नहीं तो पहले FSC तक मुझे राइटिंग के मार्क्स अलहदा मिलते थे। अच्छा, तो IFRS तो आपने देखा, इसमें IAS भी शामिल है, इसमें IFRS भी शामिल है, और ये 40 है। इफ्रिक कौन से हैं, ये बुनियादी तौर पर क्यों बनाए जाते हैं और इनकी क्यों जरूरत पड़ती है, इसको भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेसेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो रहा है। ई कॉमर्स अब एक बहुत बड़ा
रियलिटी बन चुकी है। आप देखें कि दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, दे यूजुअली डोंट ओन एनी एसेट। उबर की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा टैक्सी का सिस्टम चला रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप अमेजोन को देखें तो अमेजोन खुद तो कुछ भी नहीं बेचता, लेकिन वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब आप देखते हैं एक स्टार्टअप्स का आउटबर्स्ट है। पहले जो उनसे हमारे जैसे लोग होते थे तो हमें अब्बा जी नसीहत करते थे कि पुत्र पढ़ ला, सीए कर ला, फिर चंगी जी नौकरी मिल जाएगी, तो फिर 3 साल कम से कम टेक के करी किसी एक सेठ को, छेती ना छड़ी, सीवी खराब होता है। लेकिन नाउ इट्स गुड टू सी दैट यंग जनरेशन जो सी है वो एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट के साथ बड़ी हो रही है। और मैं आज आया तो वो, बल्कि ये मेरी बेटी ने बनाया कि बाबा ये मैंने बनाया, और ये उसने इश्तिहार बनाया कि बाबा इसके प्रिंट आउट लेकर आने हैं, तो मैं ये ऑफर करूंगी। तो इसको अगर मैंने पढ़ा तो इस पे लिखा हुआ है चीप एंड अफोर्डेबल, इफ यू वांट एनीथिंग जस्ट मैसेज मी एट माय नंबर एट 3 PM एट आफ्टरनून, थिंग्स आई विल सेल डेकोरेटेड कलर शीट, A4 साइज शीट, पेन्स, चार्ट पेपर, ग्लिटर शीट, सॉफ्ट पेपर। सो आप सोचें कि अगर 8 साल की एक बच्ची इस तरह का माइंडसेट रखती है, बिकॉज दे नो इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड, वी नीड मनी टू डू गेट एवरीथिंग, इवन हैप्पीनेस। जो कहता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, वो पैसे मुझे दे सकता है, मेरे अकाउंट नंबर ले ले। तो ये एक माइंडसेट जो सा है बुनियादी तौर पर मटेरियलिस्टिक है। तो आई डोंट माइंड इन दैट कि इस्लाम आपको इससे रोकता नहीं है। अगर आप एक लीगल वे से जायज तरीके से एफर्ट करें, तो हमने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस डाल के अपने आप को बिजनेस से दूर किया, और हमने दूसरों को स्पेस दे के काफी नुकसान उठा लिया हुआ ऑलरेडी। तो एनीवेज इफ्रिक क्या करता है? इफ्रिक क्या है? एक इंटरप्रिटेशन कमेटी है। बुनियादी तौर पर किसी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बन जाती है जो स्टैंडर्ड में उसकी गाइडेंस नहीं अवेलेबल होती, या कुछ ऐसी आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जिनका किसी भी स्टैंडर्ड से ताल्लुक नहीं होता, और वो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक वेरी नॉमिनल ट्रांजैक्शंस होती हैं या नॉन रिकरिंग नेचर्स की होती हैं, तो वो कहते हैं यार अभी इस पे स्टैंडर्ड नहीं बनाते, बड़ा एफर्ट लगती है, इसकी बस इंटरप्रिटेशन दे दें कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर लें। इसमें सबसे बेसिक जो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ वो इफ्रिक 1 ही की दे देता हूँ, कि बुनियादी तौर पर अगर आप IAS 37 में जाएं तो इट टॉक्स अबाउट प्रोविजंस। जब वो प्रोविजंस की बात करता है तो वो प्रोविजंस में कहता है कि आपने तमाम प्रोविजंस का डेबिट P&L में मारना है और क्रेडिट बैलेंस शीट पे। लेकिन जब डीकमिशनिंग लायबिलिटी, रेस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग की आती है, रेस्टोरेशन की, तो वहां पे IAS 16 कहता है कि, और IFRS 16 भी अब कहता है कि आप इसको कैपिटलाइज कर दें। तो जब हम IAS 37 को जाके छानते हैं तो वो ये तो कह देता है कि प्रोविजंस की रीअसेसमेंट करें, बट वो ये नहीं बताता कि वो डेबिट P&L में तो नहीं लगा हुआ, वो तो जाके एसेट में लगा हुआ, और एसेट तो डेप्रिशिएट हो रहा है अपनी पॉलिसी के तहत, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। सो आपने देखा कि एक एक्सक्लूजन आ गई जिसकी गाइडेंस ना IAS 16 दे रहा है ना IAS 37 दे रहा है। तो जब ये इशू आया तो उन्होंने कहा ISB को, भाई बताएं इसका मैं क्या करूं, मैं कैपिटलाइज तो कर बैठा हूं, आगे प्रोविजन चेंज हो गई है, मैं क्या करूं। भाई डिस्काउंट रेट चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गई, ठीक है। तो फिर वो इफ्रिक 1 आया, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है, रिवोल्यूशन मॉडल हो तो ऐसे कर लें और कॉस्ट मॉडल हो तो ऐसे कर लें। सो दिस वे इफ्रिक, और इनका पुराना नाम अच्छा हुआ चेंज कर दिया, सिक कहते थे, SIC। तो वो बंदा वैसे ही सुन के बीमार सा महसूस करता था, तो उन्होंने कहा यार इफ्रिक ही कर दें। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसकी भी अहमियत को हम लोग उस तरह नहीं समझते बीइंग ए प्रोफेशनल, जो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत है और जो इम्पोर्टेंस है इसको समझना चाहिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अगर हम
समझना चाहें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स का आइन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFRS। अब जिस तरह पार्लियामेंट होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, इसी तरह IASB भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव में। तो क्या हुआ, जब आपकी एक दस्तूर साज असेंबली आई, उसने आइन बना दिया, तो IASB में भी आइन बनाया, आइन बना के उन्होंने एक जनरल गाइडेंस दे दी। तो जिस तरह आइन कहता है कि जी तमाम पाकिस्तान में कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, द सेम वे IASB कहता है कि अच्छा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो कहता है कि मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कि जी, वो कहता है जी एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। फिर उसने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। फिर उसने कहा जी एलिमेंट्स जो उनसे हैं उसकी रिकग्निशन कैसे होगी, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, और फिर उन एलिमेंट्स की मेजरमेंट क्या होगी। अब एलिमेंट्स क्या हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल कह लें, इनकम, एक्सपेंस, ऐसे ही है। द सेम वे कंपोनेंट्स की बात करूं तो आपको पता है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स। ये 5 कंपोनेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो ये 5 एलिमेंट्स होंगे। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आइन कैसे है, ठीक है, ये समझना भी जरूरी है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आइन ऐसे है कि हम अगर एसेट की मिसाल लें तो वो कहता है कि एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ऐसे ही है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, और जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक भी बेनिफिट फ्लो करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोल। इकोनॉमिक रिसोर्स जौन सा है, अगर उसका कंट्रोल आपके पास है तो वो एसेट आपका है, ऐसे ही है। फिर वो कहता है कि रिकग्निशन, तो रिकग्निशन हम भी जब कैफ में थे तो 2 लफ्ज रटे लग गए थे, एक ये था कि व्हेन इट इज प्रोबेबल, और दूसरा क्या था, रिलायबली मेजरेबल। तो ये 2 जुमले हैं। अब ये आइन कैसे, आइन ऐसे है कि किसी भी एसेट को आपने रिकग्नाइज करना है तो ये 2 बेसिक क्राइटेरिया तो मीट करने हैं। हाँ, उसका रेलेवेंट स्टैंडर्ड कोई एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर सकता है, लेकिन इन 2 को चेंज नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? तो वो IS38 की बात करें तो वो आइडेंटिफाइबिलिटी की तरफ भी चला जाता है। भाई एक इंटेंजिबल चीज है ना, जिसको आप फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो फिर उस पर कंट्रोल कैसे शो करेंगे, ऐसे ही है। तो वहां पे जहां पे किसी एसेट में ये 2 क्राइटेरिया नहीं है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो वाइड होगा। तो ISP के जितने स्टैंडर्ड हैं आप जाके देखें तो आपको ये 2 लाइनें जरूर मिलेंगी। इट इज प्रोबेबल, यानी मोर देन 50% चांस है कि ये पैसे आपको ही मिलेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरा ये कि इसकी कॉस्ट रिलायबल। अब ये जो रिलायबल कॉस्ट है, इसको आप कैसे लेते हैं, रिलायबल कॉस्ट? मैंने कहा ना प्रोबेबल, तो 50% से ज्यादा चांसेस आपके हैं कि वो आपके पास आएगा। हाउ डू यू सी रिलायबल, किस एस्टिमेट को मैं रिलायबल मानूं, किस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ? देखिए, हम कुछ भी करते हैं ना तो हम स्टैंडर्ड में एक नुक्ता भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाते हैं तो वो कहीं लिखा होता है। जिस तरह IS1 ने कहा कि जी राउंडिंग ऐसे करें और ये ऐसे करें। तो जनाब रिलायबल एस्टिमेट IS37 कहता है कि रिलायबल एस्टिमेट होता है बेस्ट एस्टिमेट। और बेस्ट एस्टिमेट कौन दे सकता है? जो एक्सपर्ट होता है। आप बीमार हो के मैकेनिक के पास जाएंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो गाड़ी ठीक करता है, बंदे ठीक नहीं करता। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो जब आपने प्रोविजनिंग करनी है तो सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आती है, केसेस, लिटिगेशन। तो स्टैंडर्ड कहता है कि
लिटिगेशन, तो कौन एक्सपर्ट है लिटिगेशन का? लॉयर। तो लॉयर जो से वो नई बुखारी ने एक दफा कहा ना कि मुकदमा जो सा है कभी भी लॉयर नहीं हारता, वो तो आपका क्लाइंट हारता है। मैं तो नहीं हारा कभी, मेरा तो क्लाइंट हारता है। तो वकील सारे ऐसे होते हैं, तो वकील जो सा है वो केस के बारे में बेस्ट एस्टिमेट दे सकता है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि हम ये जो रिलायबल रिलायबल का शोर बचाते हैं ये होता क्या है। तो रिलायबल क्या होता है, या IS-37 कहता है बेस्ट एस्टिमेट होता है, और बेस्ट एस्टिमेट हमेशा एक्सपर्ट दे सकता है, और ये वर्डिंग उधर मेंशन है। क्लियर? सो आई होप कि ये रिफ्रेशर वर्क काम करेगा। ये बेसिकली पर्सपेक्टिव भी मेरा ये है कि इसको रिफ्रेश किया जाए, मेमोरी को ना, गर्द पड़ जाती है। सो ये दो चीजें हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी स्टैंडर्ड्स और होंगे आप इसमें एड ऑन्स देखेंगे। मतलब आप रेवेन्यू को देख लें, वो रेवेन्यू में 5-6 है ना IFRS 15 में। अगर वो स्टेप 5 में कहता है जी रेवेन्यू रिकग्निशन करना है, तो पोजेशन ट्रांसफर और मैनेजेरियल कंट्रोल होना चाहिए, एंटाइटलमेंट, पेमेंट की एंटाइटलमेंट होनी चाहिए। तो उसमें दो चीजें ये भी हैं, लेकिन उसमें तीन चीजें एडिशनल है। तो लेकिन ये दो लाजमी है, बिकॉज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आप नहीं जा सकते हट के। क्लियर? उसके बाद मेजरमेंट। अब जो मैं आपको बेसिस बताऊंगा चार, आप देखेंगे कि यार ये 40 में से जो आपके 13 प्रेजेंटेशन के मैं निकाल दूं, तो जो बाकी के 27 स्टैंडर्ड हैं वो आपको बुनियादी तौर पर इन चारों मेजरमेंट क्राइटेरिया के अंदर ही घूमते नजर आएंगे। नंबर 1, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट मॉडल आता है आपका? बुनियादी तौर पर कॉस्ट मॉडल में हिस्टोरिकल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे ना, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। नंबर 2, मार्केट वैल्यू। नंबर 3, रेजिडुअल वैल्यू, रियलाइजेबल सॉरी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, और फिर प्रेजेंट वैल्यू। क्लिक किया माइंड में? IS-36 में जब वैल्यू इन यूज निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रोविजन अगर आपकी 1 साल से लंबी हो, प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही है IS-2, NRV, रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम है? नॉट नेसेसरली। क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस है? आई IFRS 13, देखिए आई डू अंडरस्टैंड कि हम उस तरह अपडेट नहीं होते। हम भी, जारी बात है कि अभी तो मैं भी पिछले 2-3 साल से पढ़ा नहीं रहा, लेकिन ये है कि एक वो बीमारी लग गई हुई है। हाँ, नहीं अच्छी बात है वो। कहते हैं ना गोद से गोर तक पढ़ना चाहिए। और लर्निंग आई थिंक कीप्स यू यंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो यू फील द एनर्जी। तो इसी तरह होता है कि जब आप कुछ नया काम करते हैं ना, तो मैं पढ़ाता भी था कंसल्टेंसी, तो फिर मैं 3 घंटे का लेक्चर देकर आता था, तो मैं बेगम को ये कहता था कि आई एम फीलिंग फ्रेश। कि जब मैं 3 घंटे का लेक्चर दे के क्लास से निकलता हूं ना, तो मैं बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा होता हूँ फॉर सम रीजन। तो वो इट्स ऑल अबाउट कि आपका पैशन, ऑब्सेशन क्या है। ऑब्वियसली देखें, ये तो सदका जारी है ना, तो ये तो एक चीज है। और इट शुड कीप गोइंग ऑन। अब अगर मैंने ऑनलाइन कॉलेज शुरू किया था पैक के साथ, तो देखें आज कितने कॉलेजेस हैं और आज बच्चों के पास कितने ऑप्शंस हैं। तो मूडल मैंने इम्प्लीमेंट किया, वही चल चल रहा है। बिकॉज मूडल मैंने खुद कनाडा में सीखा था, तो मैंने उधर भी इम्प्लीमेंट करा दिया। तो ये बेसिकली
अच्छा, मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करता हूँ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मार्केट वैल्यू में से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस कर दें तो वो फेयर वैल्यू। सिंपल। मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू बोथ आर सेम। चलें, लेट मी पुट इट दिस वे। अब आपने पूछ ही लिया, इंटरप्रिटेशन दी है, तो मेरा ख्याल है इसको क्लैरिफाई। IS2 पढ़ा होगा सबने। IS2 के शुरू में ही वो बात करता है कि NRV एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट है, जबकि फेयर वैल्यू मार्केट स्पेसिफिक मेजरमेंट है। ऐसे ही है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यार, होंडा की जो कंपनी है वो अपनी गाड़ियों की प्राइस खुद सेट करती है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी होंडा खरीदता है वो उसकी प्राइस मार्केट से मालूम करता है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज होंडा को होंडा से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट डिमांड क्या है, उसका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। मतलब मुझे एक बंदे ने बताया कि ब्लैक कलर की सिविक नहीं बिक रही थी, तो उनके प्लानिंग वाले बैठे, उन्होंने कहा यार ब्लैक कलर की सिविक नहीं निकल रही, लोग वाइट ले जा रहे हैं, दूसरी ले जा रहे हैं। तो उनमें जो समझदार था उसने कहा कि आप इसकी प्राइस बढ़ा लें। उन्होंने ब्लैक वर्जन की प्राइस बढ़ाई, वो हाथों हाथ बिकने लग गया। बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ देयर कस्टमर। क्लियर? तो एक स्ट्रेटेजी होती है। सो बुनियादी तौर पर अपनी प्रोडक्ट को, उसका क्रिएटर सबसे जान, जिस तरह अल्लाह हमें सबसे बेहतर जानता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, इसी तरह अगर हमने कुछ बनाया है तो उससे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही है। तो बिकॉज होंडा नोज व्हाट शुड बी द प्राइस, व्हाट शुड बी द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए उसकी इन्वेंट्री के लिए, वो होंडा ही बता सकता है। लेकिन हाँ, मेरे पास होंडा नहीं है और ना मैंने बनाई है, मुझे तो एक पेमेंट करके गाड़ी मिली है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं तो सोचूंगा यार अच्छा मेरे पास ऐसी है, तो मार्केट में भी इस जैसे चली हुई इस मॉडल की गाड़ी की क्या वैल्यू चल रही है। तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करते हैं। सो फॉर दैट रीजन जो आपका एसेट होता है वो उसकी एग्जिट प्राइस आप लेते हैं, हाइपोथेटिकल लेते हैं, आपने बेचना नहीं होता, बट आप मार्केट पार्टिसिपेंट से वो प्राइस पिक करते हैं। और उसके लिए जाहिर बात है वो प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट IFRS 13 ने पूरा एक डिटेल सेटअप सिस्टम दिया है, प्रोसेस दिया है, जिसको आप फॉलो करके एक प्रिसाइज फेयर वैल्यू पे पहुंच सकते हैं आप। तो मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में सिर्फ ये है कि मार्केट वैल्यू में माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्यों? वो कहता है कि फेयर वैल्यू वो होती है जो उस एसेट को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन से बायर को दे सके। अगर आपके पास गाड़ी वाकंट में खड़ी है और बायर इधर बाहर खड़ा है, तो आपको गाड़ी यहां पे लानी पड़ेगी तो वो खरीदेगा ना। आप उसे यहाँ पे ला के देंगे तो वो खरीदेगा, वो आपकी गाड़ी के पीछे नहीं उधर आएगा, वो कहेगा जी बहुत पड़ी है, बेचनी है तो इधर लाएं। तो इस वजह से स्टैंडर्ड कहते हैं, ये तो एक जर्नल में है, लेकिन ऑब्वियसली जारी बात है बहुत सी मशीनें, एसेट्स ऐसे हैं जिनको डिसमेंटल करके लाना पड़ता है, तभी वो है ना। क्योंकि बाहर तो कहता है चलो जी लोड करो मैं ला जाऊं, उसको तो नहीं होता अच्छा यार डिसमेंटल करेंगे ऐसे करें। अब जो IFRS 5 है, हेल्ड फॉर सेल, अब उसमें जो हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, उसमें एक यही है ना, इमीडिएटली अवेलेबल। अगर आप ये कह दें कि जी एसेट जो है वो तो 6 महीने में तैयार होगा, तो फिर कहते हैं ये तो ड्रामा आप कर रहे हैं ना, ये तो विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं अकाउंट्स में आप, इसीलिए आप मुझे कह रहे हैं। तो इमीडिएटली सेल होना चाहिए ना, रैशनैलिटी है। सो दिस वे इट इज सिंपल नाउ। सर फर्क है ना? नहीं नहीं, देखिए NRV बुनियादी तौर पर वो निकाल सकता है जिसने वो एसेट बनाया, और नॉर्मली NRV 0 मीटर एसेट का होता है। जब गाड़ियां बन के शोरूम में खड़ी होती है ना होंडा के,
वो सारी एट पार होती हैं। लेकिन अगर मैं 10 होंडा 10 मुख्तलिफ बंदों को दूं और महीने बाद उन्हें लाइन में खड़ा करके कहूँ कि दिखाओ गड्डियां, क्या उनकी कंडीशन, उनकी माइलेज, उनकी वेयर एंड टीयर सब सेम होगी? तो फेयर वैल्यू याद रखें कि ये सेकेंडरी मार्केट होती है और ये हमेशा यूज्ड आइटम ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सोचें खुद, कितने अरसे से इंडस्ट्री में है, कभी आपने नए एसेट की फेयर वैल्यू निकाली है? नया एसेट तो आप पे करते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पेड। एम आई राइट? देखिए वो डिपेंड करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड दो चीजों पे आ जाता है। अगर तो वो एसेट आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है, फिर तो आप बदकिस्मत है, फिर तो आप एक्सचेंज रेट का इफेक्ट नहीं ले सकते, फिर तो आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो फ्यूचर प्रोडक्ट्स पे गाड़ियों को क्यों लॉसेज हो रहे हैं? अब आप देखें तो आप वो छोटी सी साबुदानी आल्टो तो 30-32 लाख की कर दी है, फिर इसकी फिर भी वो इतना लॉस दिखा रहा है बिलियंस का। उसकी वजह ये है कि जो मटेरियल उन्होंने उसको मंगवाने के लिए खरीदा, जो प्राइस सेट करके सौदे उठा लिए, फर्म कमिटमेंट कर ली IS2 के तहत, उसका जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आया तो एक्सचेंज रेट बेकाबू हुआ हुआ था, तो वो उसको नहीं कंट्रोल कर सके। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में क्या है कि अगर आप रिवैल्यूएशन की पॉलिसी में चले जाएं तो फिर ऑब्वियसली, बिकॉज फिक्स्ड एसेट से आप बेनिफिट ले रहे होते हैं यूजेज की वजह से। इन्वेंट्री में आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करना ना, तो वो जब उसका कंटेक्स्ट बदल जाएगा तो उसकी वैल्यूएशन बदल जाएगी। एम आई क्लियर? तो ये क्लैरिटी हमें जेन में रखनी चाहिए अपने बिजनेसेस में भी, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ओनली वी आर द वंस हु कैन डिफाइन एनआरवी, नो बडी कैन, बिकॉज वी नो आवर प्रोडक्ट बेस्ट। लेकिन अगर हमने किसी के लिए एक एसेट बनाया हुआ है तो वो भाई हम नहीं बता सकते, वो मार्केट डिटरमिन करेगी। किसकी? नहीं नहीं नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स आपके भाई। देखें करंट नॉन करंट की जो सेग्रीगेशन है IS1 ने की है, उसने कहा जी 12 महीनों में या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो करंट कर दी, तो प्रेजेंटेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, measurement has nothing to do with the current and non current, it's merely a presentation thing। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमने जहन में क्लियर रखनी है कि ये पर्सपेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा जी, तो ये जो चीजें हैं आई थिंक इट वाज वर्दी ऑफ डिस्कशन के ये हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? अब इसी को हम एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट ऐसा बनाया है जो आप देखेंगे, अगर यू अलाउ मी तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। नथिंग, वी जस्ट डिस्कस्ड के 40 स्टैंडर्ड होते हैं। 40 स्टैंडर्ड, उनमें से 13 प्योरली प्रेजेंटेशन से डील करते हैं, 14 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो एसेट्स को डील करते हैं, और 13 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिस तरह रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रोविजंस को डील करते हैं। तो उससे आगे फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ्रिक क्या होता है। आई थिंक एट दैट टाइम यू वर हेयर। इफ्रिक जो सा होता है वो ऐसा ट्रांजैक्शन होती है जिसकी गाइडेंस स्टैंडर्ड में मिसिंग होती है, तो उसको कवर अप। फिर उसके बाद हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में गए थे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ना। अब ये मैंने बनाए हुए हैं, तो ये ऑब्वियसली मेरे वो लिंक्डइन पे तो है, लेकिन फोल्डर से यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड। अच्छा जी, ये एक्चुअली माइंड मैपल में खोलूंगा, वो आप लोगों के पास ऐप नहीं होगी, मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। रीडेबल है? इस तरह वो थोड़ा सा आउट होगा, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपको ना फिर वो हो जाएगा। हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा,
अच्छा जी, इसमें बुनियादी तौर पर क्या है कि मैंने 5 स्टेप्स बनाए हैं कि जब भी आप एज ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसको 5 फेजेस में देखना है। तो अब आपके पास एक ट्रांजैक्शन आती है बिजनेस में एंड यू नीड टू नो कि यार कौन सा स्टैंडर्ड इस पे लगना है और मुझे किधर टाइम बचाना चाहिए। तो इस ड्यू प्रोसेस में स्टेप 1 है कि आप पहले तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाएं और देखें कि ये कौन सा एलिमेंट है भाई। ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है। तो वहां पे जो डेफिनेशंस बेसिकली गिवन है तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये एसेट आएगा और ये मेरे पास 1 साल से ज्यादा चलेगा और पैसे फ्यूचर में आएंगे। अगर अभी जाने तो एक्सपेंस है, अगर आने हैं तो इनकम है, और अगर फ्यूचर में जाने हैं तो लाइबिलिटी है, और अगर रेजिडुअल इंटरेस्ट है तो इक्विटी है कि ये कॉमन स्टेक का। अब इसमें मैं एसेट्स, क्योंकि हमने देखा कि 14 स्टैंडर्ड ऐसे जो एसेट्स को डील करते हैं, एम आई राइट। तो हम इसमें देखें तो बुनियादी चीज जो समझने वाली ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में मैं कहता हूं कि एक एसेट है और वहां पे जो मेन क्राइटेरिया वो है कंट्रोल, कि उस इकोनॉमिक रिसोर्स का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। फिर आपने सेकंड स्टेप ये देखना है कि उसका कंट्रोल आपके पास आया कैसे। क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया या लीगल टाइटल या ऑनरशिप के थ्रू आया, ऐसे ही है। फिर हम बहुत से कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, ऐसे ही है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंसिस्टेंसी। अब ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, तो हमें रेवेन्यू में कौन सा प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए। मैचिंग, मैचिंग प्रिंसिपल के आपने अगर रेवेन्यू बुक किया तो आपने उसकी कॉस्ट भी साथ बुक करनी है। ये ना होना कि कॉस्ट ऑफ सेल ना डालें और आप कहें जी इनकम ही प्रॉफिट है। इसी तरह जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स की जो प्रिमाइज है वो बुनियादी तौर पर है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो जब हम लीगल टाइटल और ऑनरशिप के थ्रू कंट्रोल हासिल करते हैं तो 99% केसेस में उस ऑनरशिप और टाइटल के साथ हमें उसका इकोनॉमिक बेनिफिट या सब्सटेंस भी ट्रांसफर होता है कि हम ही उसके बेनिफिशियरी होते हैं, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा ही होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन बीच में डाल दी है लीजेस की, जिसमें रजिस्ट्रेशन बुक खोलो तो उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, चला मैं होता हूँ ड्राइविंग सीट पे, मेंटेनेंस भी मेरी, इंश्योरेंस भी मेरी, बेनिफिट भी मेरा, ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि वहां पे लीगल टाइटल और ऑनरशिप किसी और का है, लेकिन उसका सब्सटेंस, इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि उसका सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड मेरे पर है। तो वी आर नॉट लॉयर्स, वी आर अकाउंटेंट्स। तो अकाउंटेंट्स जो उनसे हैं वो रैशनैलिटी में चलते हैं कि यार चीज तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेनिफिट भी आपका, नुकसान भी आपका है, तो फिर आपका ही हुआ ना। तो फिर हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम उस पर चले जाते हैं। फिर उसको फर्दर किया कि आपने स्टेप 3 में वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इसमें देखना क्या है। एम आई क्लियर? कंट्रोल के बाद तो जब आपको ये पता है कि मैंने सब्सटेंस ओवर फॉर्म को जरूर चेक करना है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस इसके मुआहदे में लिखी है, आया ये कंट्रोल में ऑनरशिप के थ्रू ले रहा हूं कि वैसे ही ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में हमने ये देखना है कि अच्छा अगर इसका कंट्रोल ऑनरशिप और उसके थ्रू आया तो देखें, हमने ये देखना है कि ये जो एसेट है इसको मैंने बिजनेस में बेचना है, रूटीन में ये मेरी प्रोडक्ट है, IS2। अगर मैं वो टेंजिबल है और मैंने उससे बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जिसके लिए भी यूज करना है तो IS16, ऐसे ही है। अगर उस एसेट में इंटेंजिबिलिटी है, फिजिकल सब्सटेंस दिया, IS38। अगर गवर्नमेंट ने अनायत किया, कैश दिया या एसेट दिया तो IS20 में चला जाएगा। अगर मैंने बिल्डिंग या लैंड, देखिए मशीन अगर आप किराए पे देते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप बिल्डिंग या लैंड किराए पे दे देते हैं तो वह IS16 से निकल जाएगा और IS40 में जाके गिर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो ही चीजें आज की गिरती हैं, वो PPE से, वो है बिल्डिंग और लैंड। ठीक हो गया। फिर IS40 है। फिर अगर वो कोई जानदार
है चरिंद परिंद, तो वो आप IAS 41 में ले जाएं। फिर अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं वो लेस देन 20% हैं तो IFRS 9 में ले जाएं। अगर वो 20% से बिलो 50% के दरमियान है तो आप IAS 28 में ले जाएं। अगर वो 50% से ज़्यादा हैं तो IFRS 3 में ले जाएं। ठीक है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग डेट पे भी कायम है तो IFRS 10 भी उठा के लगा दें, कंसोलिडेशन भी करें। ठीक है, इसी तरह अगर 20% है तो या उससे ज़्यादा है तो IAS 28 लगा दें। अगर परसेंटेज कुछ भी है लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसके तहत आप यूनानिमसली कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको दूसरे पार्टनर की कंसेंट चाहिए, बेशक आपके 90% है लेकिन 10% वाला आपको कहता कि नहीं जी मेरे पास वीटो पावर है, आपने साइन किया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट कंट्रोल है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ज्वाइंट कंट्रोल का कभी मकसद ये मतलब ये नहीं होता कि 50-50, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ज्वाइंट अरेंजमेंट की प्रीमाइस बेसिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, शेयर होल्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि वो राइट्स क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो IAS 27 है, और फिर ऑब्वियसली अगर वो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया तो फिर IFRS 16। क्लियर? तो ये इस तरह के ये फ्लो चार्ट्स हैं, ऑब्वियसली ये मैंने बताया कि ये आप अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो था बेसिकली एक ओवरव्यू के कैसे हमारे स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर है और वो कैसे है। दूसरा, याद रखें कि जो प्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपके एसेट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं या दूसरे, उनमें आपको हर स्टैंडर्ड में 4 चीज़ें लाजमी मिलेंगी। एक चीज़ होगी डेफिनेशंस, जो बताएंगी कि कौन सी चीज़ इसके अंदर फॉल करनी है। दूसरी चीज़ होगी रिकग्निशन के कब आपने डबल एंट्री डालनी है। फिर उसकी मेजरमेंट कि आपने उसको मैयर कैसे करना है, और ये मेजरमेंट होगी कि जब आपने रिकग्निशन डबल एंट्री डालनी है तो अमाउंट क्या लिखनी है, और फिर रिपोर्टिंग डेट पे अमाउंट क्या लिखनी है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसको आपने कंपोनेंट्स में किधर प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है या इनकम स्टेटमेंट में दिखाना है। क्लियर? चलो, अच्छा जी, अब हम आते हैं IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन की तरफ। ठीक हो गया? अब ये कि हमने एक जर्नल ओवरव्यू लिया, बिकॉज एक रिफ्रेशर था IFRS का, तो जब मैंने लिस्ट देखी तो मैंने कहा कि स्पेस ना रह जाए, तो एक जर्नल डिस्कशन में यह कि हम एक वो बेसिक आइडिया को समझ लें। अच्छा, अब इसमें बिजनेस कम्बिनेशन में जो IFRS 3 बात करता है, इसमें वो बड़ा ब्रीफली डिफाइन करता है। और याद रखें कि IFRS 3 में भी जो स्टैंडर्ड्स में इशू है वो ये है, बाज़ औक़ात कि एक चीज इधर है तो वो कह देगा कि इसको दूसरे स्टैंडर्ड में जाके देखें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको हफ्ते का टाइम दूं और IFRS 9 पकड़ा दूं तो आप उसका सिर पैर नहीं सीधा कर सकेंगे हफ्ते में। क्यों? वो पूरा स्टैंडर्ड इतना पुअरली ड्राफ्टेड है कि वो हर टगे लाइन के बाद कह देता है कि आप फलाने पैरा में चले जाएं, तो आप उसमें ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो नहीं बन पाती। इसीलिए वहां पे फिर आपको इंस्ट्रक्टर या कंसल्टेंट की जरूरत पड़ जाती है। इसी वजह से शायद ISB में भी कंसल्टेंट ही शामिल थे जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग ही ऐसी की है, अदरवाइज बाकी स्टैंडर्ड फिर भी बेहतर डिफाइंड है। अच्छा, इसमें वो बात करता है कि जी एक्वायरर कंट्रोल हासिल करे किसी बिजनेस का, 3 चीजें मैंने बोली। एक, एक्वायरर कंट्रोल हासिल करे किसी दूसरे बिजनेस का। अब इसमें अगेन मेन चीज क्या है? कंट्रोल। ये कंट्रोल कैसे डिफाइन होगा?
IFRS 3 कहता है कंट्रोल को समझना है तो IFRS 10 में चले जाएं। IFRS 10 में चले जाएं तो वो कहते हैं कंट्रोल का मतलब ये है कि यू शुड हैव पावर, यू शुड बी अफेक्टेड बाय द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी, कि उसके अगर रिटर्न्स, उसके प्रॉफिट्स या उसके डिविडेंड का कोई इफेक्ट आता है तो वो आपको इफेक्ट करता हो। और तीसरी चीज ये कि उस पावर और रिटर्न का आपस में ताल्लुक हो। सो इस कंट्रोल में जो पहली चीज वो बात करता है वो कहता है पावर। पाकिस्तान में आपको पता पावर स्ट्रगल है, तो ये पावर स्ट्रगल चल भी रही है, हम भी बैठ के देख रहे हैं, सारे बैठ के देख रहे हैं। तो पावर स्ट्रगल नुकसान देती है, इसलिए स्टैंडर्ड ने उसको सिंप्लीफाई किया। उसने कहा पावर अराइजेस फ्रॉम राइट्स, हकूक से जन्म लेती है, राइट होना आपको चाहिए। ठीक है, तो IFRS 10 में पैरा 11 है जो कहता है कि पावर अराइजेस फ्रॉम राइट्स। और फिर उसने फर्दर कहा कि ये राइट्स से मुराद मेरी वोटिंग राइट्स है, और ये जो वोटिंग राइट्स हैं ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से आते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्वायरर किसी भी बिजनेस का कंट्रोल हासिल करेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके नेट एसेट्स खरीद ले। कंट्रोल राइट से आता है, और राइट सिर्फ शेयर्स देते हैं, और वो भी ऑर्डिनरी शेयर्स। कहते हैं ना आम आदमी के पास वोट की ताकत है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो उनसे वो ऊपर से खा जाता है, नीचे से लाइन में सबसे एंड पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर खड़ा होता है। सो द सेम वे कि पावर जो उनसे बहरहाल वो रेस्ट विद द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्लियर? अब जारी बात है कि जब आप आम पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं यार मुझे तो फॉरेन सोल्यूशन चाहिए, कंसोलिडेशन करनी है, बिजनेस कॉम्बिनेशन देना है, आप ही रोला है IFRS 10 से चले जाओ। तो वो सारी चीजें वो फ्लो चार्ट्स में कंपाइल हो गई कि ये कैसे है। आर वी ऑल क्लियर? तो पावर मीन्स वोटिंग राइट्स ऑफ थ्रू शेयर्स। फिर उसके बाद रिटर्न्स हैं, तो वो कहते हैं कि जी रिटर्न्स, हाँ सब्सिडरी की प्रॉफिट्स आएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डिविडेंड पैसे चाहिए तो आप सब्सिडरी के डिविडेंड से फायदा उठा सकते हैं। लिंक क्या है दोनों में? लिंक ये है कि वो कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि उस रिटर्न को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब्सिडरी को बताएं कि भाई ये करो, ये ना करो, डिविडेंड ना दो, डिविडेंड दो, कितना देना है मैं बताऊंगा। तो अगर आपके पास ऐसी पावर है देन यू आर इन कंट्रोल। सो इफ यू आर इन कंट्रोल, IFRS 3 उसे एक्वायरर कहता है, IFRS 10 उसे प्यार से पेरेंट कहता है, अबू। ठीक है, फिर लोग अक्सर पूछते हैं कि सर पेरेंट और के अलावा होल्डिंग कंपनी भी यूज होती है। तो याद रखिए पेरेंट वो होता है जो खुद भी बिजनेस होता है, और होल्डिंग वो होती है जिसका काम ही सिर्फ शेयर्स खरीदना होता है। तो ये भी एक बेसिक फर्क है। तो बिजनेस बिजनेस को एक्वायर करे तो इन एनी केस होल्डिंग या पेरेंट हो, तो ये IFRS 10 की इस्तलाह है। IFRS 3 उसे एक्वायरर कहता है, और जिसका कंट्रोल आता है उसे सब्सिडरी नहीं एक्वायरी कहता है। IFRS 10 उस एक्वायरी को सब्सिडरी कहता है। क्लियर हो गया? लेकिन बात यहां पे नहीं खत्म होती, बात आगे चलती है, और वो कहता है कि कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस। आपने जो शेयर्स खरीदे क्या वो किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे क्या वो कंपनी बिजनेस है? तो फिर IFRS 3 उस पर भी गाइडेंस देता है कि बिल्कुल जनाब, हर कंपनी बिजनेस भी नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी दूसरी कंपनी, अपनी एक कंपनी को रजिस्टर करवाती है, खुद इनकॉर्पोरेट करवाती है, और उसके सारे शेयर्स खुद खरीदती है या खुद रखती है, सॉरी। अब वो खुद रखती है, पेरेंट कंपनी खुद एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करवाती है, क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है? नहीं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए शेयर्स का खरीदा जाना जरूरी है। अगर कोई पेरेंट किसी कंपनी को खुद इनकॉर्पोरेट करवाएगा
तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा और उसमें कोई गुडविल नहीं होगी। ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन जो पेरेंट करवाएगा उस पे IFRS 3 नहीं लगेगा, हाँ IFRS 10 लगेगा, कंसोलिडेशन होगी, IFRS 3 नहीं लगेगा। IFRS 3 के लिए सेल परचेज होना जरूरी है, शेयर्स की खरीदो फरोख्त। दूसरा, बिजनेस की हम बात कर रहे थे कि जी बिजनेस क्या होता है, तो IFRS 3 ने आगे अपनी एक्सप्लेनेशंस में जाके कहा कि कोई भी कंपनी बिजनेस होगी कि उसमें अगर तीन चीजें होंगी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। समझ तो गए होंगे आप। तो कोई भी कंपनी है, अगर उसके पास रॉ मटेरियल है, टेक्निकल रिसोर्स है, फाइनेंसिंग है, ठीक है, मैनेजमेंट है, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तो यस दे हैव द इनपुट। प्रोसेस, कि हाँ उस इनपुट को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का सामान सब कुछ है, कि वो बटन दबाएंगे मशीन ऑन हो जाएगी और रॉ मटेरियल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यस, इट मींस दे हैव द प्रोसेस। देन आउटपुट के वो फिनिश गुड्स। तो याद रखें, इतनी रिलैक्सेशन IFRS 3 ने जरूर दी है कि वो कहता है कि वो कंपनी भी बिजनेस कंसीडर होगी जिसके पास इनपुट और प्रोसेस हो, बेशक अभी उसने प्रोडक्शन स्टार्ट ना की हो। मतलब आप जाके चाहती है ना हमारे से इतने ना कि यार गोदाम में फिनिश गुड भी है क्या, नहीं नहीं तो बिजनेस नहीं है भाई। ठीक है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है, सारा कुछ है, बस प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, इवन देन इट्स अ बिजनेस। क्लियर। फिर वो कहता है कि बिजनेस होना, अगर ये बिजनेस नहीं है तो वो कहता नहीं ये, फिर आपने जो सा ना एसेट्स खरीदे हैं, फिर आप IAS 16 IAS 38 के हिसाब से ट्रीट करें, मुझे तंग ना करें। ठीक है। मुझे IFRS 3 में तभी है कि जब आप ये करें। फिर एक और चीज, वो कहता है बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल भी बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। अब बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल का मतलब ये है कि जो मिसाल के तौर पे CA के रिजल्ट पे आने पे तो अब्बा जी नहीं कुटते होते, लेकिन ये है कि मटर कैफे में आप फेल हो जाएं तो अब्बा जी आपको मार भी लें तो आप अब्बा तो नहीं बदलते ना, अब्बा तो अब्बा ही रहता है। बस ये कि कोट खाने के बाद थोड़ी देर बुरा लगता है, फिर ठीक हो जाता है कि यार गलती अपनी भी सी। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है A, उसकी सब्सिडरी है B, और फिर उसकी सब्सिडरी है C। अगर ये ग्रुप स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए कि A, B और C, B अपने शेयर्स A को बेच दे, C के शेयर्स A को बेच दे, तो यहां पे ऊपर कौन है? पहले भी कौन था? A। दोबारा कौन है? A। वो कहता मुड़ मुड़ के नहीं मैंने अप्लाई करना। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इस रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन के केस में, जबकि अल्टीमेट अब्बाजी सेम रहेंगे, अप्लाई नहीं होगा। एम आई क्लियर? अब फिर एक सवाल ज़हन में उठता है कि सर आपने बताया कि कंट्रोल जो सा है होगा तो IFRS 3 होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपने फर्दर टेस्टिंग क्या करनी है? तो अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपने देखना है कि कहीं ज्वाइंट कंट्रोल तो नहीं है, किसी मुआहदे के तहत किसी और के साथ मिलकर तो नहीं इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि ज्वाइंट कंट्रोल है, अगर कंट्रोल है तो IFRS 11 लगा देना। अगर ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है तो फिर आपने देखना है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, मतलब BOD की मीटिंग में जाके रोला डाल सकता है, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो कहेगा ठीक है हाँ यार रोला तो डाल सकता है। तो 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं तो फिर वो कहता है कि आप उस पर IAS 28 लगा दें। ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं है, वो
20% से कम शेयर है तो फिर ऑब्वियसली IFRS 9 लगेगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में चला जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये शेयर्स आपने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं या आपने वैसे रखने। तो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिए तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। बाकी सबके लिए यू हैव इर्रिवोकेबल सिलेक्शन टू मेक, कि एक नाकाबिले वापसी फैसला होगा कि मैंने इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI या P&L। क्लियर? वैसे तो टेक्निकली जो चीज़ें हैं ना इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो थोड़ी हमारे प्रैक्टिकल नॉर्म से हट जाती है। नॉर्मली वी डू अंडरस्टैंड के रियलाइज प्रॉफिट जो सा होता है वो P&L में आता है, अनरियलाइज्ड OCI में जाता है। तो IFRS 9 इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन कि जहां पे हम देखते हैं कि हमने शेयर्स बेचे भी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड हमें चॉइस दे रहा है कि आप इसका जो अनरियलाइज्ड गेन है वो P&L में भी लेके जा सकते हैं। एम आई क्लियर? जारी बात है कि अगर P&L हिट होगा तो एक वोलाटिलिटी का फैक्टर आता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे एम ही नहीं है कि स्टैंडर्ड ने कह दिया तो आपने नहीं P&L में रखते हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल आप भी कहेंगे कि नहीं यार OCI में फिर लेके जाओ, मेरा P&L तो मेरे रेगुलर ऑपरेशंस के रिजल्ट्स दिखाए ना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये तो हो गया कि इफ़ यू डोंट हैव कंट्रोल, व्हाट इफ़ यू हैव कंट्रोल? तो इफ़ यू हैव कंट्रोल तो फिर वो कहता है कि बिस्मिल्लाह करें और एक्विजिशन मेथड लगा दें। बोर तो नहीं हो रहे? कितना टाइम हो गया यार, पानी दे दो। अच्छा, एक्विजिशन मेथड। अब एक्विजिशन मेथड IFRS 3 कहता है इफ यू हैव कंट्रोल अप्लाई एक्विजिशन मेथड। अब एक्विजिशन मेथड जो सा है इसमें जो सा है 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स हैं और सिंपल स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 1 कि अब्बा जी कौन है, एक्वायरर कौन है। और स्टूडेंट्स को मैं ये कहता होता हूँ कि 100% केस में आई कैप ने बताया होता है एक्वायरर कौन होता है। तो एक्वायरर कौन है? जिसके पास कंट्रोल आया, जिसके पास पावर आई, जिसने शेयर्स खरीदे हैं, वो एक्वायरर है। इसके बाद स्टेप 2 है डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन स्टैंडर्ड कहता है क्लोजिंग डेट यूजुअली होती है। तो क्लोजिंग डेट क्या होती है? जिस दिन मैंने पैसे दिए या कंसिडरेशन ट्रांसफर की, जिस दिन मैंने वो कंट्रोल हासिल किया। तो कंट्रोल मैं पेमेंट जब दूंगा तो मैं कंट्रोल का बगैर तो नहीं दूंगा ना। तो जिस दिन मैं कंसिडरेशन दूंगा दैट विल बी द डे आई विल बी इन कंट्रोल। बट इट कुड बी अ डेट बिफोर और आफ्टर, वो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है कि वो मुझे कहेगा सर जी चलो हफ्ता दे दो, हफ्ते महीने बाद ले लेना कंट्रोल, या चले पहले ही ले लें जी मेरे को लड़की चलती पई है तुम ले लो। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्लोजिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट द डे यू ट्रांसफर्ड कंसिडरेशन। तो ये तो 2 छोटे स्टेप्स हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है जो बेसिकली सारे फसाद की जड़ है। वो ये कहता है कि एक्वायरी या सब्सिडरी इसके नेट एसेट्स जो से हैं वो आइडेंटिफाई करें, इसके नेट एसेट्स आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सबको फेयर वैल्यू पे लें। और फेयर वैल्यू कौन सी? डेट ऑफ एक्विजिशन वाली। सो नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में अगर हम सिंपली इसको देखें तो नेट एसेट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी आइटम अपीयरिंग ऑन सब्सिडरीज बैलेंस शीट। क्लियर? चले चलते चलते मुझे ये भी बताएं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरर तो
एक्विजिशन मेथड लगाएगा, एक्वायरी क्या करेगा? भाई वो शेयर्स खरीद रहा है। मर्जर भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है। एग्जैक्टली exactly. भाई जो एम्प्लाई होगा वो सिर्फ दुआ करेगा कि नवा आने वाला मैंने कड्डे ना, ठीक है, या मेरी तनख्वाह ना काट देवे। भाई सब्सिडरी को कटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऑनरशिप बदलेगी। सुबह जिस तरह जिस गाड़ी पे आप गए थे, अगले दिन उसी गाड़ी पे आके उसी सीट पे बैठना है, बस सलाम किसी और को करना है। एम आई क्लियर? क्योंकि शेयर्स जिससे खरीदे जा रहे हैं वो तो सब्सिडरी का शेयर होल्डर है और उसके जाती अकाउंट में पैसे जाने हैं, ना सब्सिडरी में पैसे जाने हैं ना आने हैं, ना उसको ताल्लुक वास्ता है। तो ये चीज याद रखें कि बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन का जीरो इम्पैक्ट है सब्सिडरी पे। सब्सिडरी कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेगा पेरेंट करेगा, एक्वायरर करेगा। आर वी ऑल क्लियर? अब ये नेट एसेट्स, यहां पे IFRS 3 कहता है बी रियलिस्टिक। मैं आपसे ये पूछूं, आज के दौर में अगर कोई मर्जर होता है या कोई कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हासिल करती है, क्या वो उसके टेंजिबल एसेट्स के पीछे जाती है या इनटेंजिबल एसेट्स के पीछे जाती है? एग्जैक्टली, इनटेंजिबल। बड़ी सीधी सी मिसाल है ये, आपको पुरानी कश्मीर हाईवे मौजूदा श्रीनगर हाईवे पे मैकडोनल्ड्स नजर आता है। मैं आपसे कहता हूँ कि साथ वाले पंप पे आप भी बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग बनाएं, इसी तरह पैटर्न पे M की जगह A लिख दें, B लिख दें। डू यू रियली थिंक के पीपल विल कम द सेम वे दे कम टू मैकडोनल्ड्स? विल दे पे द सेम प्राइस फॉर द सेम मील? नहीं। क्यों? गुडविल, ब्रांड, कस्टमर रिलेशनशिप, रेसिपी, ठीक है, रिलेशनशिप है, एम्बियंस है, ट्रेंड स्टाफ है, कंसिस्टेंट टेस्ट है, ऐसे ही है, क्वालिटी है। मतलब मैं कहूँ तो KFC का बर्गर खा के भी शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, लेकिन मैकडोनल्ड्स का टेस्ट और उसके वजह से कभी मैदा मेरा खराब नहीं हुआ। तो जब मैं लाहौर में था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने डॉक्टर के पास एडमिट होता था फूड पॉइजनिंग पे। तो उससे मुझे यकीन हुआ कि खोतों वाली बात शायद सही है। तो पिंडी इस्लामाबाद आके वो, यू वॉन्ट बिलीव कि एक दफ़ा हुई थी फूड पॉइजनिंग और वो सेवर खा के हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद से मैं सेवर नहीं खा रहा। तो लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर जो इंटेंजिबल एसेट्स, अब ये तो सबको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक जो और चीज़ भी जेहन में आ जाएगी आपके, सर इंटेंजिबल एसेट्स अगर उस पेरेंट उसके पास गया है तो इंटेंजिबल एसेट्स का तो क्राइटेरिया बड़ा सख्त है IS 38 में। वो तो कहता है इंटरनली जनरेटेड जो उनसे हैं इंटेंजिबल एसेट्स, उनमें जिनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है वो तो आप भूल जाए, वो तो रिकग्नाइज नहीं करने। और अगर जिनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है उनको भी R&D के क्राइटेरिया पे परखना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और उसमें से भी कोई कोई पास होगा, कोई कोई कामयाब होगा। तो उसके तो हो सकता है जिन इंटेंजिबल एसेट्स के पीछे वो आया है वो तो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या करें? सो IFRS 3 कहता है कि हम अकाउंटेंट हैं, हम सब्सटेंस देखते हैं। हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन बाज़ाहिर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए नहीं है, ये तो उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है
जो हमें नजर नहीं आ रहे। IFRS 3 कहता है कि वो जो IS 38 ने आपको रिकग्नाइज नहीं करने दिए थे ना, उनको अब आप रिकग्नाइज कर लें, लेकिन आप कंसोलिडेशन में करें, सब्सिडरी की बुक्स में नहीं करेंगे। आप गुडविल निकालने के लिए जो नेट एसेट्स निकालेंगे उनमें वो इंटेंजिबल क्यों। वो कहता है जी मैंने तो आपसे कहा था कि कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल ना हो। अब तो बायर और सेलर ने बैठ के निगोशिएट किया, क्योंकि सेलर इतना बेवकूफ तो नहीं है, उसे पता है कि यार आप मेरा एम देख कर नहीं आए, या आप मेरा वो नहीं, आप तो मेरे ब्रांड के पीछे आए हैं, आप तो मेरी गुडविल के पीछे आए हैं, आप तो मेरी पेटेंट के पीछे आए हैं, आप तो मेरे डिजाइन के पीछे आए हैं, आप मेरी जो ये रॉयल्टी, ये जो बुक है या जो कह लें आर्ट वर्क है, या आप मेरे म्यूजिक के पीछे आए हैं, आपको वो चाहिए, आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट चाहिए, आपको मिनरल राइट्स चाहिए, एक्सट्रैक्शन राइट्स चाहिए, आपको लैंडिंग राइट्स चाहिए, तो आप तो इसके पीछे आए हैं ना। जब आप इसके पीछे आए हैं तो वो सारी चीज़ें जो कस्टमर रिलेशनशिप, जो क्लाइंट लिस्ट होती थी, जो आपके डिज़ाइन और ये वो जो आपने रिकग्नाइज नहीं किए हुए थे किसी फॉर सम रीज़न, ब्रांड्स वगैरह, वो सारे आप रिकग्नाइज करेंगे। क्लियर। फिर उसके अलावा एक और चीज़ भी करेंगे। मिसाल के तौर पे गीगा मॉल भी आपको पता होगा, तो ये जो इधर है, क्या नाम है, सेंटोरस, फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि जी सब्सिडरी ने वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आज से 10 साल पहले एक शॉप किराए पर ले ली थी ऑपरेटिंग लीज पे, और उसका किराया वो 50,000 एग्री हुआ था, और वो अब बढ़ते बढ़ते भी 2-2.5 लाख पे पहुंचा है, क्योंकि वो लंबा मुआहदा है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, तो वो उस ऑपरेटिंग लीज में फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स एज कंपेयर टू मार्केट एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सब्सिडी उसका किराया दे रही है 2.5 लाख, लेकिन अगर आज आप एम्पोरियम सेंटोरस वालों से पूछें कि यार ये दुकान कितने पे होगी अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ, तो कहेगा भाई जी 10 लाख। तो पेरेंट उस ऑपरेटिंग लीज में वो जो राइट ऑफ यूज एसेट बुक करेगा और लीज लायबिलिटी, उसमें वो इसका इफेक्ट डालेगा, और वो 7.5 लाख ऐड करके उसको बुक करेगा। एम आई क्लियर। और इट कुड बी अनफेवर। एम आई क्लियर। फिर इसमें ये चीज भी पॉसिबल होती है कि पेरेंट और सब्सिडरी आपस में पहले कोई सेल परचेज कर रहे हो। जब वो सेल परचेज कर रहे होंगे तो वो रिसीवेबल पेबल्स भी खड़े होंगे पुराने, तो वो कहता है जो प्री एग्जिस्टिंग जो उनसे है ना आपके रिलेशंस, उनकी उनको आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के नेट एसेट्स में नहीं लेना, बिकॉज वो आपका सेपरेट रिलेशनशिप है, और उसको आपने ऑब्वियसली जब कंट्रोल करेंगे तो आपने उसको सेटल करना है। तो उसकी सेटलमेंट कैसे करनी, ये भी IFRS 3 ने बताया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की। एम आई क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। ऑब्वियसली कि इसकी डिटेल्ड वर्किंग या डिस्कशन में हम नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि ये आपको पॉइंट्स जहन में रहने चाहिए कि ये कुछ बेसिक्स हैं। फिर अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खड़े हैं, तो वो कहता है कि पेरेंट ने डेट ऑफ एक्विजिशन पे उनकी रीअसेसमेंट करनी है कि आया उनकी मेजरमेंट या क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा कि IFRS 9 फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो सी है उसकी रिक्लासिफिकेशन अलाउ नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल एसेट की अलाउ करता है। तो वो कहता है कि कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव है या कोई फाइनेंशियल एसेट है, तो वो कहता है कि उसकी आपने
रीअसेस करनी है पेरेंट ने, और अगर पेरेंट को लगता है कि नहीं इसकी डेजिग्नेशन कुछ और होनी चाहिए तो वो आपने करना है। ठीक हो गया। So I've been requested to conduct remaining of the session in English because there are many overseas foreigners on the Zoom. So they requested to conduct the rest of the workshop in English. So, but in any case, if you have any clarification or you need anything you want me to explain in Urdu, I can do that. So anyway, so let's start. So business combination, we started that for a business combination, the acquirer should have a control over business. So control has been defined in IFRS 10, which says that you should have a power. So power comes from voting rights, and voting rights obviously emerges from the shares. Then it talks about return. So returns obviously should be in control of the acquirer. So being a majority stakeholder, he has a control over the subsidiary. So for that reason, the second thing we need to understand is the business. So business actually, the acquiry should be a business. So for the business, IFRS 3 says it should have three things: input, process, and output. So we had discussed that input means that he should have resources, financial resources, technical resources, and all the logistics. And process means that all the necessary things to process raw material or input into finished goods or output. So once it's done, then IFRS 3 says that if you have a control, then you need to apply acquisition method. So there are 5 steps in acquisition method. One of that is, if you see at the top, I think I can also write on it. No. Wait. So there you see the step 1. So in step 1, the first thing is to identify the acquirer, and in most of the cases, or in almost every case, it is very apparent who has the control. So that entity who has the control is the acquirer, and the date of acquisition we had discussed, it will be the closing date, which is usually the date the consideration transferred to the acquiry owners of the acquiry, not the acquiry itself. Okay. So we had discussed that in case of business combination, there is zero effect on the financial statements of the acquiry because it has nothing to do with it. Only the ownership gets changed and nothing else. Okay. So everything needs to be done by acquirer, and once he is identified and the date of acquisition, the critical point is the step 3, which we can see: identifiable net assets of acquiry. The screen, our screen just lags a bit, so we need to wait. Okay, so in that we were discussing that, okay, what do we need to understand at the time of net assets. So we had discussed that anything which is appearing on acquiree's balance sheet should be taken into account by the acquirer at fair value, and fair value at the date of acquisition. Clear? So, but there are some exceptions. We had discussed that usually nowadays the business mergers are usually for intangible assets, not for the tangible assets. And we also know that there is a very harsh or tough criteria in IS 38 to recognize internally generated intangible assets. So we know that if an acquirer comes after an acquiree, so obviously his acquirer usually
comes after the intangible assets. So IFRS 3 creates an exception there, and it asks to recognize all the unrecognized intangible assets of acquiree for acquisition method, because obviously the outcome would be the goodwill or bargain purchase. So in that, standard clearly says that there is a possibility that the acquirer or acquiree must be dealing with each other or doing trading with each other before the control by acquirer. So that relation is termed as pre-existing relationship by IFRS 3. So all the transactions related to pre-existing relationship will be excluded, because they will not be part of that, because acquirer would be acquiring the things owned by other parties or owing to other parties, like there are creditors or there are debtors. So if parent has to pay something or has to receive, it's a separate thing. So it should not be part of consolidation or business combination. So it will be excluded. It will not come into the working of net assets. Same way, if sometimes acquiree usually has a skill set which might be acquirer might not have, or obviously if there is a good CEO in the acquiring company and acquirer wants him to continue as a CEO, but the CEO asks that, okay, I would be in need of a higher remuneration if you want me to continue. So that remuneration or anything paid to the former owners of the acquiring, former shareholders, so all those remuneration will also be excluded. That will not be part, because that will be related to the future services. And anything for acquisition, we know a lot of things, expenses incurred usually by acquirer, and acquirer may ask acquiree to incur some of those expenses out of their pocket, and those expenses later reimbursed by the acquirer. So those will not also be part of that acquisition. Then we had discussed the classification. If there are financial instruments appearing in the acquiree or subsidiary's balance sheet, the parent will have to check the classification or reassess the classification of financial assets, derivatives, hedging, all that as per IFRS 9. But obviously you will be studying IFRS 9 tomorrow, so that need not to be discussed in detail here. Then, so in recognition, to sum up, all the assets and liabilities which are relevant to the business combination should be accounted for, and all the intangible assets which were not recognized should be accounted for at the time of business combination. Then one more thing, very important thing, which usually we don't think of that. IFRS 3 is the standard which is applicable for only one day. That is date of acquisition. Later, you won't come back to it. You won't look at it, except if you see this pink color icon. It is measurement period shall not exceed 1 year from acquisition date. What is this measurement period? Well, let's assume that if someone comes to acquire Coca-Cola, so Coca-Cola has operation across the world. They have setups, factories all over the world. So do you really think it would be possible for the acquirer to measure or determine the fair value of all the net assets of Coca-Cola within a limited time frame? Might not. So what does standard say? It says if the figures or the amounts of identifiable net assets has not been finalized, you need to calculate goodwill or bargain purchase using provisional figures. And
you have 1 year time from the date of acquisition to finalize those figures. So once you finalize that, you can restate. Okay. And the other way other way to restate is only that IS8. If you find some error, am I clear? So there are only two scenarios when you can restate. One, if you get the final figures during this measurement period, but also remember, if you don't finalize the figures within the given time frame, you will not be able to change them again. Once the measurement period lapses, you can't do anything. You have to go with that. You have to live with that. That will be the final goodwill and you will have to move on. Okay. So this is very important. So as far as measurement is concerned, for recognition, we discussed that only the relevant net assets will be accounted for, including the intangible assets. For measurement, initial measurement will be the fair value, which is we all know, because obviously whenever you go to market, you obviously bargain for the new second-hand things, obviously. So measurement, this subsequent I have mentioned, these are few exceptions actually. These are required contingent liabilities, indemnification. We will discuss a bit later. Then we come to other exceptions. So we were discussing that a lease contract where acquiry is lessee. If you see my cursor here, no, there is a lag on the screen. So we had discussed that in case acquiry has a shop in a mall where he's paying a rental of suppose 50,000, and at the time when acquirer acquired the lessee, the acquiry, the lease is the market lease is about 200,000. So he will take that difference of 150,000 in his measurement. Am I clear? Then it says for income taxes, don't take fair value, just calculate it as per IS 12. For employment benefits, apply IFRS 19. Then indemnification assets, these are similar to like embedded derivatives sort of thing. So this will be measured similar to IFRS 9 thing. More or less, because in indemnification, you have an obligation to pay. So the obligation to deliver cash obviously is a financial liability. So it's indirectly the treatment as offered by financial IFRS 9 financial instrument. Are we all clear? Okay. So there is one major exception we will discuss, that is other than IS 38 intangible asset is contingent liability. We all know as per IS 37. IS 37 deals with four things. One is provision. Second is contingent liability. Third is contingent asset. And fourth is reimbursement. Am I right? So whenever a scenario comes, you have to make a decision. If a scenario comes, there could be two possible scenarios. You have to make a choice between whether the scenario asks you to make a provision or to classify it as a contingent liability. The other scenario would be that either it would be a contingent asset or reimbursement. But it won't be a scenario that either it's a contingent liability or contingent asset or reimbursement. It won't be the case. You always have to make a decision about whether it's a provision or contingent liability. Remember, if you have a case and your lawyer says, okay, you ask your lawyer, okay, how much would I have to pay? Lawyer says, well, I'm not confident, but I think at least 10 million. Okay. And you say, but he has claimed 20 million from me.
What about that? No, no, I don't think so. You might have to pay maximum 10 million, not beyond that. So you will take his best estimate. So that 10 million will be your provision. But the difference between that 10 and the claim of 20 million, the remaining 10 million would be your contingent liability. So remember that whenever there would be a case, either it will be a provision for 100% amount, either it would be 100% contingent liability, but in any other case, it will be a division between provision and contingent liability. You just can't say, okay, I will make a provision of 10 million. That's it. No, you will have to make a disclosure in contingencies and commitment that you have a contingent liability of 10 million too. Am I clear? And you will explain that there is a case claim over my company of 20 million, but my lawyer says that we might have to pay maximum 10 million, but obviously there is a 10 million contingent liability. So if contingent liability is material, you make a disclosure. The same way, a scenario may comes to you that either it's a contingent asset or a reimbursement. For a reimbursement, it should be virtually certain that you will get that money. Like you go to your lawyer that, okay, we have filed a claim. What about that? What's your opinion on that? Oh, surely we will win. Okay. So we will win. Okay. It's a contingent asset. It's a possible or present obligation to receive, but you will not book. When will you book? Well, the court has passed order in your favor. Yes. If the court has passed order in your favor, then this contingent asset will become reimbursement and you will book reimbursement or receivable. Am I clear? In another example, we can think of an insurance claim. You have a fire in your factory. You launched a claim. Either your legal counsel says, oh yeah, we will surely get that claim. We are fully covered. Yes, it is virtually certain. So virtually certain, more than 90% sure that you will get that. Or if you don't have legal counsel, the surveyor confirms or insurance company confirms, yes, sir, we have accepted your claim to the tune of amount this. So yes, sir, you will get that. It is virtually certain now. You have official confirmation. But before that, it will remain contingent asset. Are we all clear? But when it comes to business combination and all the contingent liabilities disclosed by subsidiary or acquiree will be recognized at best estimate. Whether it's not possible or possible only to pay, you will overwrite the criteria of IS 37 and you will book that contingent liability in the net assets of acquiree or subsidiary. Am I clear? So that liability obviously will reduce the net assets of subsidiary. On the other hand, you may have a contingent consideration too, that the parent says, okay, I'll pay this money right now as a consideration for the shares. But if your subsidiary managed to maintain an EPS of, say, rupees 2 per share for the next 2 years, or the share value of the subsidiary's share will go up by 20% in the next 2 years, I will pay you an additional amount of, say, 200 million. So this payment is also a contingent payment. So what is contingency? Which depends on future uncertain event. So you are not sure that whether that EPS target or share value target will be achieved, but you have given that commitment. So that consideration will be part of your consideration in calculation of
goodwill or bargain purchase. Am I clear? So that is very important to know that IFRS 3 overrides IS 37, and it asks you to recognize contingent liability and contingent consideration. Are we all clear? So this is the exception. Then these required share-based payment, IFRS, assets held for sale, insurance. It simply says that, okay, go to the relevant standard. So I would say that more or less in 90% cases, you simply recognize intangible assets, okay, and add them in the net assets of subsidiary or few contingent liabilities. That would be the maximum possible scenario in 90 to 95%. Very rarely you will see these reacquired rights or these lease thing. Okay, so that is not that important, but where anyways I have given everything in the flow chart. You can easily see we had discussed that lease scenario, so it's been explained there. Yeah, it's clear now. Okay, so there is a lag in the screen, so that you need to bear with me. Then this was the third step. Then comes the fourth step. We had discussed that there are 5 steps in the acquisition method. We have discussed 3. The fourth one is about non-controlling interest. So we know in every society, the poor person has no name because he's poor. So the same way in companies, if you have non-controlling interest, they are not interested to know their name. They just say, okay, NCI or non-controlling interest. Yeah, but in case you are the parent, the first step is, who is the parent? Who is the acquirer? Tell me his name. So that is the difference. So this is the reality. So in non-controlling interest, you have 2 options. For net assets, the only option is fair value. You have to measure all the net assets at fair value. But for non-controlling interest, you have 2 options. Either measure the non-controlling interest at fair value, and fair value of what? Fair value of the shares of the NCI. Okay, you may note it down or keep in your mind. Fair value of the shares of the NCI. Okay, the second, that if you are not gonna go for that fair value, you may decide to just calculate the proportionate share of the net assets. So if there are net assets of value 100 and the NCI is of 20%, you will take 20 as a 20% of that 100. Am I clear? So it's very simple. There is no complication in NCI usually. Yeah, but the only difference, what you need to keep in mind, that in case you decide to take NCI at fair value, it will be a full goodwill method. The goodwill which you will calculate, it will have a goodwill of parent plus NCI, both. Remember that, because in case there would be any impairment, you will allocate the impairment between parent and NCI. That is the only difference. Because you are recognizing NCI at fair value, the goodwill will be of full amount, including parent and NCI. But in proportionate share method, you will be calculating the goodwill of only parent. So impairment will be charged to parent only if it happens. Okay. So then comes the last point, goodwill or bargain purchase. So here I would speak some Urdu because जो मिसाल देनी है वो उर्दू भी मजा करेंगे. सो गुडविल को मैं कहता हूँ मर्दाना परचेज और बार्गेन परचेज को कहता हूँ जनाना परचेज. क्योंकि बचपन में एक लतीफ़ा सुनते थे कि एक खातून गई कपड़े की दुकान पर
और उन्होंने सारी दुकान उससे खंगाल ली और बहस कर करके एंड पे दुकानदार तंग आके कहता है बाजी आप मुफ्त में ले जाएं, तो वो कहती 2 लूंगी। तो हमारा मर्दों का स्टाइल नॉर्मली ये होता है कि दुकान पे जाते हैं, शर्ट पसंद आ गई, ठीक है पैक कर दो यार, कितने की है, ये लो। बट वी नो लेडीज डू बार्गेन अलॉट। तो यही सिनेरियो है, और इस एग्जाम्पल से वी ऑल कैन इजीली अंडरस्टैंड इन केस ऑफ गुडविल it's a man purchase, so what will he do? He will pay more than what he deserves. So if you pay 120 for 100 rupee assets, so the excess 20 would be the goodwill. And in case of bargain purchase, you will be buying net assets or shares or worth of 100 in 80 rupees. So you will be saving that 20. So the treatment, what would be the treatment of goodwill? Goodwill will be your asset, and in bargain purchase, it will be your income. It won't be your liability. Okay? It's very clear because you have saved that money. So that will be your income, not liability. And in case of goodwill, and okay, what is goodwill, by the way? How do you see, how would you define goodwill? Like people may only, may often confuses with brand. What is goodwill? It's brand. Anyone? We never read IFRS is too deep. Goodwill is the share of future profits, which the seller thinks that the company will earn. So he asks the buyer, okay, pay me a fair share of future profits in shape of goodwill. Because if you buy this company, you take control of this company, you will be earning this much money. Am I clear? So people usually thinks of goodwill or mixes it with brand. Brand, yeah. When we will see, okay, okay, let's go to eat burger. Oh yeah, you think of McDonald's, KFC, Hardee's. It means that's the power of brand. Okay, you think of pizza, oh, Pizza Hut, Domino's, Papa John's. Yeah, that's the power of brand. But goodwill is for the buyer and seller only. So seller thinks of, oh, you will be earning this much. I need fair share of this, and in my calculation, this should be this amount. Okay. So this is usually the case, but there is also some additional thing in IFRS 3, which is a step acquisition or stepwise. It is simply, we will discuss in the consolidation area in more detail, but it is simply like if you have 20% share before and you purchase 40% more shares. So now you have 60% shares. So this is step acquisition. So you will apply acquisition method when you cross 50% threshold. So very simply, what to do with that previously held interest? What do we need to do with that 20% which we already have? So the same criteria, consideration will be measured at fair value. So if it's fair value, then the consideration you paid for the additional 40 plus fair value of the 20% you already have. Am I clear? So the difference between the carrying amount and fair value will go into P&L of the parent. Okay? But you will take the fair value. Are we all clear? So this is the way. Also some interesting scenarios which we will discuss now. What could be the mode of consideration transferred by parent? It could be cash. It could be cash equivalent, some bonds, certificates. Okay. You may take a loan from the bank to pay,
the consideration. You may issue your shares in consideration and contingent consideration, obviously. But that contingent consideration, because it's an obligation to deliver cash, so it will be a financial liability. But you have to apply IAS 32 to see whether this consideration would be financial liability or equity, because you may say that if that future uncertain event happens, or the target which I have set for you, you achieve that, or the company achieve that, I'll pay you cash, or either I'll issue my shares to you. Am I clear? So if acquirer commits to issue shares, obviously then it would be equity. So this way, then there is an interesting scenario of without consideration. Have you ever thought of it? Any idea? Okay. So for this, so let me complete this also. So fourth one was the NCI. It could be fair value or proportionate share method. And then fifth one is goodwill or bargain purchase. So in this, we were discussing how come a company can become a parent or acquirer without any consideration. So repurchase, suppose you have 45% shares and other party has 35% shares, or what else? It's 20% held by some other shareholders. So company purchased, suppose 20% shares from this shareholder. So now you have outstanding shares of 15 plus 20. So how many shares do they have? Let me take out the percentage. Let's assume there are 100 shares. It's the breakup. So the company has repurchased 20 shares from the shareholder who was owing 35 shares. So what's the total now? 80. So if you take the percentage, 45% divided by 80, obviously it's above 50% now. He owns more than 50% shares now. So this way he will become the parent. And what will he do? Nothing. He will take fair value of this 45% and will compare it with the net assets to calculate goodwill or bargain purchase. Am I clear? Then the second scenario, parent had signed a contract with the minority, because minority people were afraid of acquirer and they were reluctant. So parent wants to maintain his image, or he says, okay, let's sign a contract. We will not change any policy without your consent for the next 2 years. So now, do you really think the parent has the power, despite the fact he owns 90% shares? No, because through contract, he has agreed that he cannot take decisions alone. He has to take minority on board for that. So till the time those veto rights lapse, it will not be a business combination. By the time the contract expires and parent is free now to make any decisions, till that time, what would it be? A joint arrangement under IFRS 11. Okay, make sense? And then obviously through contract, like if you own 60% share and 40% by other shareholder, and you make a contract that, okay, even though I have the shares, but I don't have the experience or expertise and knowledge,
to run the business. So why don't you take charge and run the show? I won't mind. Okay. So it means that the 40% guy has the authority, has the power through contract. So he says that, okay, now you are in control and you don't need my permission to do anything. You can do whatever you like. Then who has the power? That 40% guy, then he'll be the parent. Am I clear? I think the Etisalat and PTCL deal was something like that, and Etisalat had less than 50% shares, but as per contract, they had the power to run the operations. So this way, this could happen. Are we all clear? So this is what we have in business combination IFRS 3. So what it simply says, it talks about control. Control must be of a business, and business should have three characteristics: input, process, output. If any company has these three things, it's a business. And if someone takes control, and control comes from shares, and shares should be more than 50%, majority, unchallenged authority. So if he decides, I want to do this, okay, he can do this. Nobody can stop him. See, actually, you had remind me another scenario. We know that accounting is based on rationality. You might have heard of director loans a lot. In many private companies, you might have seen director loans. And if you ask the CFO, "Oh, what's this director loan?" Well, the director has invested his money in the company. Okay, what are the repayment terms? No repayment terms. Would you be paying any interest to the director? No, not at all. So there is no maturity, there is no repayment, there is no markup. So in real practical world, do you really think this could happen? Because if you talk about a loan without maturity, you must be joking in real world. So IFRS 9, if you want to apply amortized cost, it asks for the maturity. So this happens. So what you do, you will just keep it like that, and you will apply IS 24 and you make related part disclosure. So what you are saying that that it actually, yeah, but for that, what they can do, see, there would be the only issue how to calculate the present value of the remaining amount. Okay, so I think the remaining amount would be there at its carrying amount. Okay, they might not have discounted it because there was no maturity. Okay, so if well, that again, what I would say that again, it's all about the legality thing. So actually here the legal counsel has to step in and they have to advise. We are the accountants. What we will see, we will be looking at a contract which says that, okay, we have to pay the differential amount in future. But at what future date? It's silent about that. And you cannot discount it because you don't know what's the maturity. So what would be I think the auditors might be adding some emphasis of better paragraph or something like that and keeping it at the carrying amount. Because there is no other option, you cannot calculate and you will not find any such loan in the market or a parallel transaction to compare it.
अब वो वाइस वर्सा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी वो इनिशियल फेज क्योंकि उर्दू में था तो फॉरेनर्स ज्यादा चले गए, तो अब आप उर्दू में आ सकते हैं। वो हम बताएं। जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कंटिजेंट लायबिलिटी सिर्फ आएंगी। ठीक है। व्हेन वी विल स्टार्ट IFRS 10, आई टेल यू कि ये क्या चीज है। Anyways, let it be like that. We may like just I had to share a jokes. I started speaking Urdu, but anyways, I think the things are quite smooth and clear now. So just remember one thing that I had tell you again, and I am repeating it again, that there would not be a single entry in subsidiary or acquirees account. Okay, so just keep that in mind. So if there is a contingent liability in its separate financial or individual financial statements, it will remain a contingent liability and it will be disclosed only. But when it comes to consolidation, yes, you will have to do the consolidation working separately. And one important thing, many of you might confuse it. Remember, consolidation is merely a memoranda working. You won't pass any single entry in any ledger. Okay? This is sometimes people don't know. See, you have audited accounts of a parent. You have audited accounts of subsidiary. You have to just combine them. You just cannot pass any individual entry in anyone's ledger. You cannot pass any entry in parent's ledger for consolidation. It is a memoranda working, which is usually done in Excel spreadsheet. And remember one thing more, you have to do that memoranda working every year when you come to audit, because you just can't tick the opening figures and just start working. It is simply the date of acquisition, the post acquisition, and you take the difference between the date of acquisition and post acquisition as post acquisition, and then you deduct figures of the previous year audit file. Am I clear? So that gives you the right answer. If you think of that, okay, in consolidation, I'll come and I'll do the taking. How would you do that? There is no ledger. Am I clear? This is very tricky point, which usually accountants don't know, or don't, I would say they don't think of it, but which is usually the case. It is simply a memoranda working. We have to do it on Excel spreadsheet, and we have to do it every time whenever we come to audit. Yeah. Obviously, when there was no Excel, obviously you had to do it on manually. Even I did that, but obviously I don't look that old. Actually, I color my hairs. So actually, I did audit where there were used to be manual ledgers, and the trial balance is usually out. So you have to spend either 1 or 2 days to just reconcile it first, then start audit. So yeah, these are the realities. So this is it actually. So simply we can say IFRS 3 is a standard for only one day. That is the date of acquisition. And it talks about control. And if you are sure of the control, and simply if you have more than 50% shares, you have a control. Then you need to apply acquisition method. And there are 5 steps. Identify the acquirer, determine the date of acquisition, which is usually apparent from the contract or agreement of the business combination. Then the main tricky area is the
identify the net assets to be recognized for business combination. So usually they are the assets and liabilities appearing on the subsidiary's balance sheet, and then obviously the intangible assets which are not recognized under IS 38 being internally generated and could not meet the criteria of cost identification or R&D. But because the parent is coming after that, so they have to bargain and they negotiate a price. So at that price, they will be recognized because that will be considered a fair value. Okay. So that you may say a bit a sort of thing, because if you know the IS 38, you might know that in IS 16, you have a choice to apply cost model or revaluation model. But in IS 38, you would know that cost model you can apply, but revaluation model can only be applied if there is an active market for the intangible asset, which is not the case in 99% cases. Have you ever seen that these licenses which are being sold by PTA, can you find them in the market anywhere? No, these are specifically issued intangible assets. Like government can't give licenses, okay, for mining or broadcasting, landing rights to anyone, or okay, go and sell it in the market. No, they tender it, they do bidding, and then they award it. So that is the reason this is very tricky area. So usually we simply say, okay, it's cost model, revaluation model, and even in IS 16, you would know that the revaluation model, you take the price, the value identified by the valuer, professional valuer. You just don't take the market value, because it is usually the replacement cost. What does the valuer do? He says, okay, this is the building which I have to value. Okay, it's a 5 years old building. So if I construct such a building nowadays, it would cost me this much per square foot or per meter. And then he will calculate the cost. Then he will depreciate it over the 5 years. And then he would say, okay, now this is the revalued amount for you. Am I clear? So even in IS 16, it doesn't say that, okay, you can take any fair value or no. It must be determined by a professional valuer, and usually it's being calculated using replacement method. But in case of intangible, you cannot apply a revaluation model to all intangibles. Very rarely, because I have never seen any active market for intangibles. Like if a pharmaceutical company, they have some medicine formula, would they be selling it in the market? No. The parent would know who would be certainly his competitor. He would know that, okay, he has developed something and I know. So he may ask that, okay, sell it to me. He says, no, I won't sell it. Okay, I'll buy you. So this is hostile takeover. If you will not sell it, I'll buy your company. I'll be the boss. So this happens. Okay. So this is the reality. So that is the reason. So now we will move further. So now we will think of, we will start discussing IFRS 10 consolidation. So date of acquisition, this could be any date during the year. It could be the first day of the financial year of parent, or this could be the last day of the financial year of the parent, or could be any day during the mid of the year. So the basic premise, just like any other standard of IFRS 10, it says for consolidation, first thing that it's applicable on the listed companies only. But obviously, if someone wants to comply in private sector, they can do that. So IFRS 10 says that, okay, parent who got control of a subsidiary, do you still have control at your reporting date? The parent says, yes, I still have the control. I have more than 50
Okay, then you have to combine your results with the subsidiary, because IFRS 10 says, in my view, you both are same. So this is what they call a single economic entity. This is the basic premise, I would say the basis of IFRS 10. Single economic entity. If you know this concept, if you understand this concept, you won't get wrong in consolidation. What does it mean? Single economic entity. He says, okay, suppose I am parent and I am controlling subsidiary. So if he says that for me, if you do any transaction, you are simply transferring money from one pocket to other. You are shifting inventory from one warehouse to other. For me, you are single person. Am I clear? So can I claim that if I transfer inventory from one warehouse to another warehouse and I say I have earned profit of 20%, does it make sense? Will you accept that? No. You are trading with yourself and you are claiming you are profit, you are making profit, you are joking. So that's the all thing that for parent, for group accounts or consolidation, parent and subsidiary, they are one single person. If they have booked any profit among themselves, between themselves for any transactions, they have to reverse it. They have to eliminate. I cannot say there is a receivable or payable from or to parent or to subsidiary. No, I cannot say that I have to receive this money from myself. I have to pay this money to myself. So for consolidation, now it's very clear what you need to do. You will take that receivable payable out of your consolidation. You will eliminate it. You will eliminate intra-group profits and transaction, because in the income statement, the sale between parent subsidiary or subsidiary parent is not a sale. So you will have to reverse that sale, because you just simply shifted your inventory from one warehouse to another. So that it wasn't a sale. So you will reverse the sale and accordingly you will reverse the purchase from the other company. And obviously this would be again a memoranda working, and you won't reverse it actually in the ledgers. See, the cost would remain in your group accounts, because that inventory is still your inventory. See, yeah, that's agree. See, in case that inventory which has been sold to third party onward, it won't be reversed. Okay, yeah, unsold, only the unsold inventory. But remember one thing, the sale will be reversed 100%, but the profit will be reversed only to the extent of unsold inventory. Remember one thing, that sale or purchase, that will be reversed 100%, but the unsold inventory, the profit will be reversed to that extent only. The inventory which has been sold to third party, that profit will not be reversed, because for example, parent plus subsidiary is equal to group. So he had an inventory, he sold it to subsidiary to 120 and subsidiary sold it to third party
third party in 140. Okay. So 20 rupees profit coming here, 20 here, that's okay. But if out of this 50% is still in subsidiaries warehouse, then you will reverse the profit of that, but you will reverse in any case this sale, because parent will reverse the sale made to the subsidiary, but subsidiary will not reverse its sale to third party. Yes, obviously the third party is the outside party. So for parent or subsidiary, because the basic concept is they both have been treated single economic entity. So a one person can't do trading with himself. Yeah, obviously. Any sale which is being made onward to the third party, it won't be reversed. We are talking about unsold stock. Yeah, but in case of fixed assets, because we can simply say in case of inventory, any unrealized profit will be reversed. Okay, let me put it this way or rephrase it to make it simple and understandable. Any unrealized from the perspective of group, if there is any unrealized profit because that inventory was not been sold to anyone further onwards, so that will be reversed. But in case of fixed asset, it won't be unrealized, because if parent has sold a fixed asset to a subsidiary is utilizing that asset and taking benefit of that. Yeah, but that profit and the excess depreciation on that profit, it will be reversed. Am I clear? So this is the way what we do in IFRS 10. So what we do, simply we eliminate dividend which comes from subsidiary, because I cannot pay a dividend to myself. Sale, purchase reversed, receivable payables. Okay. So these are the adjustments which we usually made in consolidation. But what I'll do, I'll show you a 5-step working. I would say for the balance sheet, and one working for the income statement, for you to have a better overall understanding of the way things work and the information flows. So yeah, oh yeah, it's very simple. I will no, just let you know that, see, business combination, IFRS 3, it talks about acquisition method. It's a method. It's a method for date of acquisition. Then IFRS 10 talks about consolidation method, a second method which we apply on reporting. That is the difference. And date of acquisition is only a one date, while reporting dates will come after every year. So consolidation method will repeatedly apply on every reporting date till the time parent has control over subsidiary. But date of acquisition was the one date when he got the control. So in acquisition method, you simply calculate the goodwill or the bargain purchase. Okay, what's the benefit parent got out of it or loss out of it? But in case of consolidation, you simply merge parent and subsidiary financial statements. So these are two totally different things. Exactly. Yes. If the parent has incorporated subsidiary itself, it's beyond the scope of IFRS 3, because it's not acquisition. IFRS 3 talks about only
the subsidiary which was acquired, for which the parent has paid some consideration or through without consideration scenario, acquired the control through acquisition. But in case of incorporation, it's not through acquisition. So IFRS 3 won't apply, but IFRS 10 will surely apply. Okay. So I'll show you an example also. Is that clear? So if you see the consolidation example, here you can see we have a goodwill, we have a parent. So PP investment, he made 300 rupees investment, then inventory, debtors, banks, and you see it's the balance sheet of parent. It's the balance sheet of subsidiary. So because that intra-group transactions, they are different things in which you have to reverse the unrealized profit or the profit and depreciation, all that, or dividend. But in this, if you see, I have balanced it out. If you see, he invested 300 and he got control of 60% shares. So I have assumed simply that he acquired the subsidiary on the last reporting date. So there is no post-acquisition profits for simplicity, just to understand or grab the concept. So he invested 300. What's the equity? 300. But what's the 60% of this? So 60% of this is 180. 180. 60% of 300 is 180. So, it's no touch. So if you see here, it's 120, investment 300. So what I'll do, I'll show you the entry. Sorry, yeah, I'll get back to my presentation slide. So what I'm saying, so in separate financial statements, parent, what would he do? He would do investment in as bank. Let's assume he has paid in cash. So he has paid 300. Okay. But if you talk about consolidation, he made payment of 300. Okay. So what he got? Share capital. There is a share capital of 200. So 60% of 200 is 120. 120. And retained earning profit. Obviously, it was the pre-acquisition. It was there when he acquired. So 60 out of 100. Retained earning was 100. So 60% of that is 60. Okay. So how would you balance this transaction? There is a difference. You paid 300. You got equity of 120 and retained earning along with that 60. The total is 180. So difference is goodwill. Okay. This is the way we do basic accounting, because we are accountants and we have been told whenever you get stuck, go to your basic journal entry. So when I was in Canada and I got an assignment in which I had to do consolidation with 11 subsidiaries over subs. So I got stuck. So my CFO was worried because in Canada, it's the client's responsibility to prepare complete financial statements with all disclosures and everything, and auditors will simply come to review that and they will do some compliance and testing, and then they will issue the audit report. It's not just like in Pakistan, you have to first
do all the entries for the client and update his trial balance, and then you have to make all the adjustments, everything. You have to do a lot of work on his part to get it done. Even though that's the reason we get more in-depth knowledge of the client's business, or we have more command as compared to overseas auditors. So I have to balance it out. So why would I pay 300 against 180? Obviously, I have paid to the seller for the future profits. So I have paid 120 over and above that. So this means when I'll be doing consolidation, I have to knock it off this. But what about goodwill? No, it will be there in consolidation. So how would I manage and keep it tally? Yes, I know that this 180 I got, so remaining 120 belongs to NCI. Belongs to NCI. So what will happen? I will do entry here. You will see. I will do this is, remember again, memoranda working. This is the consolidation entry. So I have to take out this investment. Are we sure? Investment 300. It's gone. So you will not see this in the consolidation. I have credited because it was debit. But now I have to take out the equity of subsidiary too, because in consolidation, only the equity of parent will come. Am I clear? Yeah. So what I'll do share capital 200. I'll do retained earning 100 total. I will reverse all that. So apparently it's tally, but no, I'll do NCI 120 and I have to book goodwill in the consolidation. So this is actually the complete entry. This is the entry. I showed you that for the consolidation, but this is the complete entry. So if you see here, at the bottom, so this is the entry which has taken effect above here, and if you see, the consolidated balance sheet is tally. So this way it works. So I have included NCI just to make it more clear, and I have kept it simple. I didn't involve post acquisition. Obviously, some people ask that, okay, sir, why do we take pre-acquisition profits? We have purchased equity. Why don't we take only shares? Why do we take into account? Why do we take that retained earning into our working? Actually, if you see practically, if you invest 100 rupees in bank and you get a 10% return, annual return over and above that, what would happen? You will book 100 rupees in bank, you will credit cash and debit bank 100. But once you will get 10 rupees profit, you will debit bank by 10 and credit P&L. So now you have 110 rupees. The same way in the companies, you invest equity and retained earning or profit is the return over and above that. So that belongs to you, like 100 rupees were of yours. So that 10 rupees profit is yours. So the same way, if you have 200 share capital, then the profit you earn 100 over, it's also yours. So what happens, in fact, that it's a discretion of the seller. Either buyer, they say, okay, you don't want to give me retained earning, okay, announce the dividend and take out the money. But why would take that why would he take that money? Because usually in Pakistan, if you say, you will have to pay 15% on dividend. So he would say, okay,
Leave it like that. Just pay me in cash for my shares and keep that retained earning with you. So obviously, the bargain will be obviously for the amount which will cover the share price and also the retained earnings. So don't get confused. Obviously, the buyer is paying for the pre-acquisition profit also within the consideration. Am I clear? So why? A simple thing will further clarify. Do we all know accounting equation? Equity is equal to assets minus liabilities. So share capital plus retained earning is equal to assets minus liabilities. Okay. So it means assets minus liabilities, what we usually call them net assets. So can I say equity is equal to net assets? So basically, the share capital and retained earning, in fact, is representing my net assets or net assets of the subsidiary. Make sense? So if that represents so, it means that if I'll pay anything, I'll paying actually for the net assets. That is the reason IFRS 3 say that the acquisition of net assets, but that acquisition of net assets by getting control, and that control comes from equity, through equity. Am I clear? So this way things work. And if you see now what we did here, we simply can see the balance sheet of parent, and we can see balance sheet of subsidiary, and the way we have adjusted, and this is the entry we passed. Am I clear? So you need to keep that in mind, that you need to understand these entries, because otherwise you won't be able to keep reconcile all the balance sheets or income statements. Am I clear? Make sense ji? Should we proceed? As the mass ka time ho gaya. So let's take a break for Maghrib prayers for 15 minutes, then we will come back. So we will resume at 6:50. नहीं वो इसी तरह ये इस तरह ठीक है. हाँ जी. क्लाउड आउट ग्लोबल है. इस पे आप चाहेंगे ना ट्रेनिंग्स के पेज पे. ये पड़ेगा इसमें ना. इसमें मेरे रिपोर्टिंग के स्टडी मटेरियल भी है, बीएफटी का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये आईएफआरएस. क्लाउड आउट एक्चुअली मेरी वो बीपीओ की कंपनी है, बुक कीपिंग और कंसल्टेंसी. इसमें जो मैं आपको कह रहा था ना, ये अब जिस तरह सपोज ये IFRS 9 है, मैं लिख देता हूँ. अब ये देखें ना, ये IFRS 9 है. अब ये 1 पेज पे है, इसमें हाँ हैजिंग नहीं है. तो मैं लिख देता हूँ इस पे नाम इसका. ठीक हो गया जी.
आउट, बादलों में ही होता है ना सारा कुछ, रिमोट काम में। ओके जी, सो लेट्स मूव अहेड। इसमें नाउ आई do that 6-step working for you, how to do the working for the consolidation, and how will it deal with the acquisition method and consolidation method together, all together in these workings. So first of all, whenever you do the working for the consolidation, the first working would be group structure. So in the group structure, what you need to do, you need to simply identify the parent. Like I would say that the working one deals with the acquisition method, first two steps of acquisition method. What are those? Subsidiary, parent, NCI. So what will you do? Like if you have 60%, 40% for NCI, this is 100%, and then date of acquisition, whatever, like it's, for example, this. So the working one deals with the first two steps of acquisition method. Okay. So once you are done, you will be very clear, okay, who has the control, how much is the control, and when did he get this control. Then the second working you will do, it will be net assets of subsidiary. And in this working, you will do calculation for the step 3, which is net assets of subsidiary. And at the same time, you do working for the net assets of subsidiary at reporting date for consolidation 2. For consolidation 2, because it will make it easy. How would you do that? Simply, you will mention the reporting date, date of acquisition, the second column, and post acquisition profit. So I would say that it's simple equation of this. So once you will deduct date of acquisition net assets from reporting date net assets, the differential would automatically be the post acquisition profit. Am I clear? Because if the net assets were of 100 rupees at the date of acquisition and they are 150 at the reporting date, then obviously the increase of 50 rupees is the post acquisition which you have earned after taking control of that. Clear? And why I had showed you I had asked about the accounting equation, because equity is equal to net assets and equity is equal to share capital plus retained earning. Am I clear? So why would I go for the rough and longer way? Why would I put all the assets, current, non-current, and then liabilities in this working? Don't you think it would be easy for me just to write share capital and retained earning? Because in any case, the value of share capital and retained earning represents net assets. So equity is equal to net assets. So share capital retained earnings is equal to assets minus liabilities. So what should I do? Very simple. Don't waste time. We don't have time. Time is the real money. So in our working, we always take a shortcut. I will not mention a long list of assets and liabilities. Rather, I would go for the share capital and retained earning. So now you will ask, okay, you had said that there will not be any single adjustment of business combination in subsidiary. So it means the figures you are using here would represent the carrying amounts of net assets of subsidiary. So what about business combination step 3? You were saying that we have to take fair value. So if I have to take fair value of net assets and balance sheet is showing me carrying amount
and I'm not mentioning assets and liabilities, what should I do? What I'll do, I will simply put a fair value adjustment. I will say okay, there is uh, carrying amount is 100 and fair value is 150. So I will mention 50 as a separate line item and I will mention fair value adjustment. Simple. So what will happen? It will bring the carrying amount to fair value level. So my problem is solved. So we need to do working professionally and the best way and easy way. Yes, yes, yes. Yes, yes. See, whenever there is a merger or business combination, don't forget there is always an exercise of due diligence. In due diligence, auditors would go and do the inventory count and will review the financial statements at that cutoff date of acquisition, and they will do all the working accordingly. Okay, because you can't do it whenever like there is a split between partnership, they don't just get separated like this. Okay, I'm not doing work with you, I'm leaving. You have to decide for a cutoff date and you have to get them audited or verified by some professional person that yes, the figures represents the truth. Otherwise, you will get into litigation very normally. So the same way, if I'm going to buy something, I would obviously negotiate the fair value, and I'll go obviously. Why would someone sell anything below fair value? So yes, they will sell it when there will be losses. He is unable to run the business, and he knows that if he will keep running the business, it will get shut down. So it's better to sell it off. That would be the scenario. That is why standard says itself in IFRS 3 that this is the scenario of usually a forced sale. Whenever there is a bargain purchase, it would be a scenario of forced sale. Like the bank may ask, okay, no, you cannot unable to run the business. You will my whole loan will be get stuck if you will not run the business properly. So you are unable, sell it off to someone who can run this business. Like if we know Warren Buffett. So Warren Buffett is a very successful private equity investor. He's one of the leading person. Like he's too old now, but what he does, his company only simply identifies the businesses which are running into problem because of the management. So what they do, they take out the management, they install the right people at the right place and make it profitable, and then they take exit. So things are like that. So people are doing different things different way. Same way we had discussed about contingent liability. So what I'll do, I'll put the share capital here, retained earning. I will take this figure from the subsidiaries balance sheet at reporting date. Then I'll put it here, the figure of retained earning at the date of acquisition determined as a result of due diligence, obviously. So this difference here will show me the post-acquisition profit, like the profit earned by parent after taking control. Okay, so that will be shared between parent and NCI. So fair value adjustment, if assets carrying value were 100 and fair value was 50, I'll simply take 50. No adjustment in the post acquisition, because it's the remember that post acquisition profits, these are profits column, not for the assets. Then what if there are depreciable assets? So if they are depreciable assets, subsidiary would be calculating depreciation on their original carrying amount or historical cost, but parent would calculate the depreciation on fair value which he has determined on the date of acquisition. Yeah,
There is a possibility that the parent may ask the subsidiary, okay, I'll take the fair value, but why don't you get revalued your assets on the same date and take that effect in your books? Yeah, that is a possibility. So then this will be depreciation. Okay, so let's assume the depreciation is of 10. Yes, so that excess depreciation, because it's an expense, it should be here. Am I clear? So it will be deducted. So if there is intra-group transactions, then obviously that profit needs to be taken out. So if suppose that is 5, then you will take out of that from retained earning. Am I clear? So this way, once you are done with all adjustments, it will be similar to this. You will make a total of this, this, and this. Are we all clear? So this would be your working 2, but how many steps we have covered in these 2 workings for acquisition method? 3. Acquirer has been identified. Date of acquisition identified, because obviously I have to calculate the post acquisition profit from that date to onwards. Then in working 2, I have achieved 2 milestones. I have achieved step 3, net assets at the date of acquisition, and also with that I have calculated reporting the net assets. Those were there, but I have made adjustment to make it for the consolidated working. Then step 3. In step 3, we will cover all 5 steps, complete all 5 steps, remaining 2 steps. So this working usually is for goodwill or bargain purchase. So what I'll do, I'll put the cost of investment. This is the consideration paid by the acquirer. This could be cash, this could be a loan, this could be equity, this could be fair value of previously held equity. Okay, so we can do it 2 ways, but I will tell you why not to do by using the second methodology. We can do this by 2 ways, like cost of investment as per IFRS 3, NCI, any previously held. This, then compare it with the net assets, and then you will get the goodwill. The second method which we used to apply when you were doing CA or I was doing CA, that was cost of investment. Like I have taken 80%, so I will put the cost of investment and I'll take net assets 60%. But this working works fine when the policy to measure NCI is proportionate share method. But if you decide to apply fair value method, this working doesn't work. But the workings proposed or suggested by IFRS 3 works well in both scenarios. So I won't suggest to use that, because that old working was that based on apple to apple, like shareholding of 60% compared with net assets of 60%. But this working shows that okay, 60% plus 40%. So if there is a holding of 100% appearing, then obviously 100% net assets. So don't you think it's simple? Make sense? So apple to apple comparison in this working, you would be comparing 100% stake with the ownership with the 100% net assets. So this will give you the same figure in case of proportionate share and the right figure in case of fair value method, because the fair value figure, if you will put it here, the goodwill that will come, it will be of parent and NCI both. Am I clear? So that's why it is highly recommended to use this. Now, how many steps were left? Step 4 and 5. Step 4 was NCI. So for NCI, if you are using proportionate,
this 40% will multiply by this total of date of acquisition net assets. Make sense? Proportionate share method is proportionate share of net assets at the date of acquisition. So date of acquisitions net assets total is there. Just apply the 40% and put the figure here. Am I clear? And if you have a fair value method, simply multiply the fair value into number of shares owned by NCI. Clear? So this will give you the figure. So either way, it's simple. So step 4 is covered. Then step 5 was for the goodwill and bargain purchase. So this is your answer. You will be comparing total ownership with the total net assets to get your goodwill or bargain purchase number. Am I clear? So out of 6, in the first 3 workings, your acquisition method is fully covered and done. Clear? So if there is any impairment in the goodwill, you will simply mention impairment and you will minus it from the goodwill. Okay. So there is a goodwill of rupees 10. There is an impairment of 2. So that 2 will go to parent. So the next working I'll be doing, that will be for NCI. So step 1, group structure. It will cover 2 steps of acquisition method. Working 2, it will cover step 3, and working 3 will cover the remaining 2. So your 5 steps fully complete. You are done with the acquisition method and you won't look back after that. Once it's done, done. You won't check it again. You won't repeat it again in any consolidation. You would be doing simply, okay, date of acquisition this, and this year's reporting date total is this. So for every audit, you will be changing working 2 for this column reporting date. You won't change anything until unless there is a change in the ownership stake. Yeah, you might increase it to 80 or you might reduce it to 55 or you might sell it off. Okay. So, sorry, I need to add more sheets. Okay, so working for would be NCI. So obviously, the NCI which I have calculated in the previous working was for the NCI at the date of acquisition. So what about post-acquisition profit? So any single penny earned by the parent after taking control, that penny will be shared with the NCI because they have 40% stake in that in this example. So what will you do? You will simply do the date of acquisition NCI, which you will take from the working 3. So you will put working 3 figure here and simply add share of post-acquisition profit. Make sense? So post-acquisition profit into 40%, you will get the answer. And if the NCI was at fair value, so if there is any impairment, that impairment portion will be minus deducted here, and that's it. We are done. Clear? Then working 5, this is group retained earning. Like this is, we are talking about parent retained earning plus post-acquisition profits of subsidiary. Post-acquisition, because pre-acquisition profits have gone into goodwill calculation. Its effect has been taken. Okay. So those have been pre-acquisition profits have been added in the goodwill calculation. So we will not bother about that. So I had told you again and again, date of acquisition method will apply on date of acquisition only thereafter. Clear? So consolidation, yes, for every reporting date. So this working 4 and 5 will be done every year for the consolidation, but this figure will remain constant till the time any change in the ownership stake. Otherwise, it will remain same. You will keep changing these two. Then
parent retained earning, just take it from parent's balance sheet and put it here. Then post acquisition profit, simply this way and put 60% here. In case of impairment, put it here. Then one thing very important, in case of intra group, just make sure who has the unrealized profit, who sold inventory, who sold fixed asset. So you have to take profit out of that party's account or entity's account. So if subsidiary is the seller, you will reverse that profit from working to. But if parent is the seller, so unrealized profit will be reversed from parent's work. Am I clear? Then you will close it out. And remember, you can note it down that these 5 workings are good enough to make consolidated balance sheet, not profit and loss. Not profit and loss. Am I clear? So this way you will do the working, and how will it work? This way. Parent plus subsidiary plus minus adjustment and then group. So what will you do? PP, put it here. If there is any adjustment, adjust here. Okay. Then goodwill, then current assets, adjust it here. Make a total. Then share capital. So share capital will always be of parent. Retained earning, this will be group retained earning. So remember, this is goodwill. So goodwill working 3. This figure will come here. Okay. So you will mention here working 3. Then group retained earning working 5. Clear? Then NCI and then current liabilities if any. So NCI working 4. So working 1 was merely for the group structure. Agree? So working 2. So working 2 is for the post acquisition. Working 2 actually has given effect in working 5 and working 4 because working 2 was related to post acquisition. So its allocation is been done in working 4 and 5. So it won't appear anywhere. Then the only working left is working 6, which is share of NCI. So IAS 1, not IFRS 10. IAS 1 presentation of financial statement asks for distribution of profit after tax and total comprehensive income between parent and subsidiary, not IFRS 10. IFRS 1 asks for that. So what you do, you will simply do the calculation, take profit after tax of subsidiary, okay, make adjustments, and a simple tip, all the adjustments which you have taken into working 2, those adjustments you will take for the year here, and you will add, suppose the subsidiary has a profit of 100. So if you have any unrealized profit in working 2, you will adjust that it here. Am I clear? So you will make all the adjustments which you had made in working 2 only. Those will come here and you will add or less them to take NCI working. So IS 1 asks for distribution. So what you will do, they have used the working attributable to parent and NCI. So you will simply take the profit after tax figure and you will take this figure from here and balancing figure here. And this is attributable to, this is profit after tax, this is TCI. So if you have anything in OCI, you will simply take that effect here and simply OCI here, and you will adjust it, and then you will take this figure here and you are done. Am I clear? So this way, and in P&L you will simply
add parent and subsidiary, and simply you will take out sale and purchase in the adjustment column the same way. Like the format will remain same here, and you will do like here, you will mention sale, cost of sale this way. Okay. Any question? So I know it's a big area to cover, but obviously I hope this we have done. So this is these are the basics. So what I'll do, I'll simply now discuss about the possible issues in the consolidation. We have discussed, okay, single economic entity concept, and we have to combine, and we have to just considering that parent and subsidiary, they are one. So they are one person. So we have to eliminate all the intra-group transactions. Then in consolidation, what could happen? There are possible scenarios. With respect to acquisition, I would say there is a flow chart for this also. There could be a direct. So direct means there was no shares owned by parent before this. He directly acquired more than 50% shares and get the acquisition. So he will apply business combination IFRS 3 simply. The second is step acquisition. So in step acquisition, there are two possible scenarios. One is that you had one associate. It means you had, say, 20%, 30%, 40% shares. Then you purchased further shares to take up to 60%, 70% beyond or above 50% shares. Clear? So the other scenario, you might have less than 20% shares. So associate, we know IS 28 apply, and if there are less than 20% share, so I will call it investment in equity, and I will be applying IFRS 9. So what I'll do? So suppose here I had 20%, here I had 10%. I acquired 40% shares here, and suppose I acquired 50% further shares. So I will book a gain and loss for the disposal of this, because I will consider it as a disposal. This is what we call deemed disposal. We assume that it's a disposal. In reality, we didn't dispose of any shares. Rather, we purchased more shares. But what we did, we converted an associate into a subsidiary. So from IS 8 perspective, it's a disposal because you don't have any associate anymore. Make sense? Logical? The same way, if anything which needs to be de-recognized as per IFRS 9, because now you don't have 10%, you have 60% shares. You cannot treat it under IFRS 9 because it doesn't fall under the definition of a financial asset. So what will you do? You will consider that it's disposed of. Make sense? So what standard says about a disposal? It says, okay, take the carrying amount, compare it with the consideration. So is there any consideration? No. So you will consider it a deemed disposal, and you will compare fair value at the date of disposal with the carrying amount with gain and loss going to P&L. Logical? Because you have disposed of associate and you have acquired a subsidiary. You have disposed of investment in equity and you have acquired a subsidiary. Logical? So you will take that out of your books. Yeah. See, before it was
under IS 28, being an associate, because you had 20% shares. So you had to apply equity method of IS 28. But now, do you have any associate after acquiring these additional shares? No. So standard says that if an associate ceases to be an associate, so if it ceases to be an associate, this could be because of disposal. This could be because you converted that associate into subsidiary. Make sense? So that's why I use the term deemed disposal. So you would be booking that fair value gain in your P&L. And obviously, the tax person would be considering it a gain, and he will tax you over that because you have taken advantage of that. But on the other hand, you will be putting that in the calculation of goodwill and in subsidiary previously held shares, like I had mentioned in the working of goodwill working 3. In that I had put that below. So obviously you will put fair value of 20% there, consideration paid for additional 40% plus NCI, and you will compare it with the net assets to calculate goodwill or bargain purchase, whatever is the case. Make sense? Then what could happen in case of disposal? Disposal, yes. Full disposal, partial disposal. Again, in case of disposal, you would be disposing of complete stake you have. So in that case, you will book a gain or loss. But interestingly, if you have any other subsidiary beyond that, if you don't have single subsidiary, you have 2 or 3 subsidiaries, then you would be showing 2 different gain and losses. Individual separate in separate financial statement, separate because I will tell you the reason. But for the consolidation, the disposal or the gain or loss value would be different for the disposal. And in case of partial, again 2 possible scenarios. You may convert it into an associate, or you may convert it into investment in equity. Like you had 60% shares, you sold 30%, now you have 20%, then it's your associate. But if you have sold, suppose 50% shares out of 60, then you have 10% shares. So now it will fall under IFRS 9. Then the same thing. Now it's no more a subsidiary. So if no more a subsidiary, you have to book a disposal, you have to book a gain or loss. And then if it's an associate, you will apply equity method. And in case of investment in equity, you will apply either fair value through profit or loss or fair value through OCI, as the case may be. Make sense, ji? So this way actually it works. Now we had discussed acquisition and disposal scenario. Now we will come to what if there is a decrease or increase in stake. Like parent has 60% share. It has further increased purchase stake of 20%. Now it has 80%. Or parent had 80% share. It has sold 20% to NCI. Now it has 60%. What to do? Because parent didn't lose the control. It had the control when he had 60% shares, and even with the 80% he has. Do you think should we apply a business combination or acquisition method again? Not at all. Because you didn't acquire
another subsidiary. Subsidiary is still your subsidiary. Only the stake changes. So what does standard say about it? It says, okay, for increase, what will you do? From whom you will be buying those shares? NCI. So you will be buying those shares from NCI. So you would be paying cash to them. So suppose we credited cash by 100. We purchased 20% stake from NCI. So NCI will reduce. So it will be debited. So suppose the worth of NCI net assets of 20% was 80. What should I do with the remaining 20? So what does IS 1 says about statement of changes in equity? What does it show? Statement of changes shows transaction between shareholders. It's a transaction between shareholders. Am I right? NCI is also a shareholder. Parent is also a shareholder. So it's a transaction between shareholder. So do you really think it has to do something with P&L? No. In P&L, you will only reflect your normal business operations. Am I right? So where would it go? It will simply go within the statement of changes in equity, and you will mention this 20 in group retained earning 20, okay, in statement of changes in equity. And it's vice versa in case of this, like NCI paid you 100 and got further 20% from you. So it would be like this. So in either case, because either you have purchased or sold your stake, it's a transaction between shareholders. So it will stay within the statement of changes in equity. Because the name says itself, statement of changes in equity. So change could be because of profit, because of dividend, because of change in ownership stake. Am I right? Because of right issue, because of bonus issue. So make sense? Then last but not least, I would say that I would ask Hamad to discuss IS 2728 tomorrow. Okay, because I don't want to drag it further. The time is up and you look tired. So what I'll do, I'll finish it with the final thing, that is complex group structure. So complex group structure. In complex group structure, we usually have two scenarios. One is vertical and other is mixed. What is vertical? Vertical, parent has a subsidiary and that subsidiary has a subsidiary. In mixed, parent has a subsidiary, then there is a company in which parent has a stake. So in total, out of 100 shares, parent directly controls 30 and indirectly controls 30. So out of 160 shares are being controlled by parent. Am I right? The same way, it has 60% shares, subsidiary has 70% shares. So parent controls subsidiary and subsidiary controls sub-subsidiary. So we can say parent indirectly controls sub-subsidiary too. But how to do consolidation in this scenario? Because you don't have direct control. So in this case, we calculate effective interest. Why do we do that? Because we don't have time to waste on doing first consolidation of sub-subsidiary with subsidiary, then consolidation with parent. We do one stage consolidation. We directly consolidate subsidiary and sub-subsidiary with parent.
So for that, what I'll do that working one here, group structure, subsidiary, sub-subsidiary, parent, NCI. Okay. First one is simple. Am I right? What about the other one? So 60 into 70, 42. So don't get surprised that effective stake showing you less than 50%, because it's not the case if actually, because you control subsidiary because of 60% of your stake in subsidiary, and that subsidiary controls sub-subsidiary as per your directions because it has 70% stake. So what would happen if you will be doing two-stage consolidation? Suppose parent, subsidiary, sub-subsidiary. So suppose this is the case. So you have 60%, you have 70%. So if this, we do consolidation of subsidiary with sub-subsidiary first, what will happen? It will add this. Am I right? Then you will apply 70% of on 170. What would be the answer? 60. 60 into 170. 102. So it will be 102. So this would be the answer. Am I right? So if you do this and this, okay, 60% of this, then 42%. So 42% of this. Am I right? Make sense? So why to waste time and effort in doing two consolidations if you can get it done with a single consolidation? Logical? So that is the reason we use effective interest in case of complex. The same we will do for the mixed. In mixed, yes, there will be a difference. What would be the difference? This will be the difference. Here, in case of mixed, you have a direct control of 30. So you will mention direct. Indirect, 60 into 30. What would be the answer? 18. So you will have 48%, then 52 NCI, and this will be 100. Am I clear? So you will be applying 48% on this to get the answer. Make sense? Then there is one thing which is, I think, not clearly mentioned elsewhere, but people do ask that question, is that what if a subsidiary has an associate? Parent has a subsidiary and subsidiary has an associate. Will we calculate effective interest for this also? The answer is no. We won't do the same working for the sub-associate. What we will do, subsidiary will apply equity method in its balance sheet. Okay. And then we will simply consolidate with subsidiary. We will not do something like this. If you think of that, okay, subsidiary has 20% in this, so it's associate of subsidiary. So why can't we multiply 16 to 20? No, we won't do that. In case of associate, we will simply keep it up to subsidiary, and whatever would be the figure appearing in subsidiary balance sheet, that will be merged in consolidated automatically. But we won't apply effective interest. Why? Because the logic is that subsidiary is in your control. So if it has all the control, then it means you both are one parent. But in case of associate, you have merely significant influence. So it
won't make sense to combine its assets and liabilities with parents' assets and liabilities. Am I clear? So just keep it simple. So that is actually what we had for today. I tried my level best to get it done, but I think the course is quite lengthy, and I think Ahmad Siddiqui would be able to explain 27, 28 way better, because I think he is manager consolidation and beyond. So that's it for today. Thanks for your patience and absorbing all this. If you could absorb, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.